Students, I request. Madam, it's live on YouTube now. Yeah. So, dear students, we would like to say that give us a couple of minutes. There is a problem in joining. So, sir is trying to join us. So, we would start in a couple of minutes' time. Tell him. Rohit sir, requesting you to at least start sharing the screen. Hello, Mohan sir. Am I audible? Yes, Rohit sir, can you share the screen? Start that. Good afternoon, ma'am. Hello, Sibyl ma'am. Hello, Mohan sir. Yes, Rohit. Sir, I think Dr. Kirti Nakre madam has joined with the name of Martand Nakre. So should Okay. I make that as a co-host? I think Gauri ma'am, is it right? Let me make them co-host and ask. Yeah, I'll just need to find out. Just give me a second. Yeah, it's my son's account. It's perfectly Okay. fine. It's me, Kirti. Yes. Okay, Good afternoon. Kirti. Okay. We Good have made you afternoon, co-host, everyone. madam. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Sandesh, we are waiting for Sir to join, and we will start as soon as he joins. So as we are waiting, I was just wondering, we have so many students here today. How many of you play any sport like actively? If you can just raise your hands if you play a sport or a part of a team of some sport. Okay, football. So we have some football players. Cricket.
Great. Volleyball. Okay. Oh, we have quite a lot of football players. Nice. Kho-kho, basketball, kabaddi, badminton. Quite a range. Skating. Great. Badminton. Get. And this is something that you all play, right? It's not just something you're interested in, but you actively play this game. Okay, great. Wonderful to know that in spite of being heavily loaded with your studies, you still manage to find time to play a sport actively. It's really nice to know. Video games, I really don't know whether that would classify as a game. Put. Okay, so we've had discussed through cricket. So we have Kho-kho, we have Kabaddi, we have chess, we have badminton, we have a lot of football and cricket players. We have sports like discus. Oh, Amrule sir is here. Dr. Mohan Amrule sir, welcome to the session. As I said before, Dr. Mohan Amrule sir is the Director, Sports and Physical Education of the University of Mumbai. And sir, are you able to speak? Yes. Okay. A warm welcome to you, sir, for the session, and I request you to present your thoughts, please. Hello. Good afternoon, Hello. sir. Good afternoon. Yes, sir, you're audible. हा आवाज येतोय क्लिअर मॅडम? हो, अगदी क्लिअर येतोय. ओके व्यवस्थित ओके येतोय. तर आजचा विषय आहे आपल्या मुंबई विद्यापीठाची क्रीडा मंडळ म्हणजे विद्यापीठाचं क्रीडा स्पोर्ट्स विभाग कसं चालतं याविषयी आपण थोडीशी सर्व विद्यार्थ्यांना माहिती देणार आहोत. पहिला विषय आहे की मुंबई हे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 आणि तो 17 ला अंमलबजावणी झाली. ती अंमलबजावणी झाल्यानंतर काही ऍक्ट मध्ये क्रीडाविषयी काही तरतुदी केलेल्या आहेत, गाईडलाईन दिलेली. त्या गाईडलाईनचा आधार घेऊन आता आपण नवीन विद्यापीठाची रचना केलेली. ती काय रचना आहे, ती रचना कोविडच्या काळामध्ये तयार झालेली आहे, त्याची मान्यता घेतलेली आहे, सगळी प्रक्रिया केलेली. पण आता विद्यार्थ्यापर्यंत आपण पोहोचण्यासाठी 2 ते 3 वर्षात सुद्धा घेतलेले आहेत. तरी आपण आजही या मुलांना सर्व विद्यार्थ्यांना कळण्यासाठी त्याची थोडीशी उजळणी करूया. नेक्स्ट स्लाइड मॅडम. नेक्स्ट. हॅलो. तर आपण पहिलं कसं होतं, मुंबई विद्यापीठाच्या 7 जिल्हे येतात मुंबई विद्यापीठाच्या कक्षेत. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशी 7 जिल्ह्याची मिळून एक स्पर्धा होत होती, आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धा. तर आता नवीन रचनेनुसार आपण मुंबई विद्यापीठाचे 4 झोन मध्ये विभाजन केलेले आहे. पहिला विभाग जो आहे मुंबई शहर, यामध्ये मुंबई शहरातील जे महाविद्यालय आहेत सगळे त्या महाविद्यालयाची एक आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धा होईल. दुसरा जो झोन आहे ते मुंबई उपनगर, म्हणजे मुंबई उपनगर कक्षेतील सर्व महाविद्यालय. तसेच पालघर मधले वसई, पालघर, डहाणू आणि तळसरी हे 4 तालुके आपण ह्या उपनगरला जोडले, जे रेल्वे रूट वरती आहे तिकडच्या वेस्टर्नच्या. त्याच्यानंतर तिसरा जो विभाग आहे तो आहे ठाणे जिल्हा. ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालय आणि पालघर जिल्ह्यातील
जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड हे तालुके आपण ठाणे जिल्ह्याला जोडलेले आहे. आणि चौथा जो झोन केलाय आपण आता तो आहे कोकण विभाग म्हणूया त्याला, आणि त्याच्यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 3 जिल्ह्याचा म्हणून आपण एक नवीन झोन केलेला आहे. तर त्याच्या विषय असं की ह्या 4ही झोन मध्ये पहिल्यांदा आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धा ह्या बाद पद्धतीने होणार. बाद पद्धतीने स्पर्धा झाल्यानंतर त्या स्पर्धेतून प्रत्येक संघातील बेस्ट खेळाडू या ठिकाणी सिलेक्शन होणार. म्हणजे उदाहरणार्थ कबड्डीचा संघ असेल तर समजा मुंबई शहरचा विचार केला तर मुंबई शहराची आपण कबड्डीच्या स्पर्धा होणार. त्यातून केसी कॉलेजचे 2, रवियाचे 1 असे जे बेस्ट प्लेयर आहेत पोझिशन मध्ये ते 12 प्लेयर सिलेक्ट होतील आणि ते 12 प्लेयर पुन्हा त्या झोनला रिप्रेझेंट करतील. असे 4ही झोन मध्ये स्पर्धा झाल्यानंतर त्या 4ही झोनच्या स्पर्धा पुन्हा इंटर झोन होणार आणि इंटर झोनच्या ह्या स्पर्धा साखळी पद्धतीने होणार. फरक असा आहे की इंटर कॉलेजच्या स्पर्धा ज्या स्थानिक स्पर्धा आहेत आपल्या त्या बाद पद्धती, त्याच्यानंतर इंटर झोनच्या स्पर्धा ह्या साखळी पद्धतीने, आणि त्या साखळी पद्धतीने जी 4 संघ खेळणार त्या 4 संघातून आपण मुंबई विद्यापीठाचा संघ निवडणार आहोत आणि तो संघ आपण पुढे आंतर विद्यापीठ, अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ, खेलो इंडिया आणि क्रीडा महोत्सव या स्पर्धेसाठी आपण रवाना करत आहोत. नेक्स्ट मॅडम. तर हे झालं आता स्पर्धेविषयी. तर आपण आता काही या ऍक्टचा आधार घेऊन आणि आपण काही ठराव केलेले आहेत बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स मध्ये. त्या स्पर्धेविषयी विद्यार्थ्यांना माहित असावं. तर आपण या पहिल्यांदा आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धा ज्या तुमच्या स्थानिक स्पर्धा होणार आहेत त्या स्पर्धेचा खर्च कसा कोण करणार आहे याची थोडीशी माहिती देतो. पहिला आहे की क्रीडा अनुदान, म्हणजे स्पर्धा ऑर्गनायझेशन करण्यासाठी त्या महाविद्यालयाला अनुदान क्रीडा विद्यापीठाकडून दिलं जाईल. त्याच्यानंतर तिथं जी संघ सहभागी होतील, उदाहरणार्थ एखाद्या कॉलेजचा संघ सहभागी झाला तर त्या खेळाडूंना गणवेश असेल, दैनंदिन भत्ता असेल ते संबंधित महाविद्यालय देईल. त्याबरोबर तिथं खेळाडूंचा दैनंदिन भत्ता सुद्धा त्या महाविद्यालयाने द्यायचा आहे. त्याचबरोबर प्रवास खर्च, म्हणजे एखाद्या खेळाडूंना त्या संघांना पण प्रवास खर्च हा त्याच महाविद्यालयाने करायचा आहे. त्याचबरोबर टीम बरोबर संघ व्यवस्थापक येथील मार्गदर्शक आले असतील त्याचा पण खर्च संबंधित महाविद्यालयाने करायचा आहे. त्याच्यानंतरचा विषय येतो की तिथं जे आपण आता म्हणलं की सिलेक्शन कमिटी आपण निवड करणार आहोत. सिलेक्शन कमिटी तिथला बेस्ट संघ निवडणार आहात तर त्या सिलेक्शन कमिटीचा खर्च मात्र विद्यापीठाच्या मार्फत करणार आहोत. त्याच्यानंतर आता आपण पुढचा जो पार्ट आपण महाविद्यालयीन महिला आता आंतरविभागीय स्पर्धेचा आपण पुढचा पार्ट आहे. नेक्स्ट स्लाइड मॅडम, एक मिनिट. तर आंतरविभागीय स्पर्धेचा खर्च क्रीडा अनुदान हे विद्यापीठ करणारे, खेळाडूंचा गणवेशाचा खर्च हा क्रीडा विद्यापीठ करणारे, मात्र आंतरविभागीय खेळाडूंचा दैनंदिन भत्ता संबंधित महाविद्यालय करणारे, प्रवास खर्च संबंधित महाविद्यालय करणारे आणि आंतरविभागीय स्पर्धेतील संघ व्यवस्थापक मार्गदर्शक यांना आपण दैनंदिन भत्ता न देता प्रोत्साहन भत्ता विद्यापीठाच्या मार्फत देणार आहोत. त्याच्याबरोबर तिथं विद्यापीठाची संघ निवड समिती असणार आहे, त्याचा खर्च विद्यापीठाच्या क्रीडा मंडळाकडून केला जाणार आहे. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट येतो ते आंतरविद्यापीठ. ती संघ आपण 4 संघातून आपण जो संघ निवडणार तो आंतरविद्यापीठ, अखिल भारतीय, खेलो इंडिया आणि अस्मिता स्पर्धेसाठी जातात. त्या सर्व स्पर्धेचा खर्च विद्यापीठावर केला जाणार आहे. एखादी आंतरविद्यापीठ स्पर्धा जर महाविद्यालयाने घेतली असेल तर त्याला विद्यापीठ अनुदान देणार आहे. त्याच्यानंतर आंतरविद्यापीठ, अखिल भारतीय, खेलो इंडिया आणि अस्मितासाठी सर्व गणवेशाचा खर्च विद्यापीठ करणार आहे. दैनंदिन भत्ता सुद्धा विद्यापीठ खर्च करणार आहे. त्याचबरोबर संघ व्यवस्थापक मार्गदर्शक यांचा खर्च सुद्धा विद्यापीठामार्फत करणार आहोत. नेक्स्ट स्लाइड मॅडम. नेक्स्ट
आपण नेक्स्ट नेक्स्ट बस ना. आता आपण ते काही दैनंदिन भत्ता म्हणलोय, आपण यापूर्वी विद्यापीठाच्या वतीने खेळाडूंना फक्त आंतर विद्यापीठ स्पर्धेसाठी आहार भत्ता आणि दैनंदिन भत्ता असे मिळून 450 रुपये देत होतो. तर यापूर्वी आपण फक्त आंतर विद्यापीठ अखिल भारतीय आणि स्पर्धेसाठी आपण खेळाडूंना 450 रुपये दैनंदिन भत्ता आणि आहार भत्ता म्हणून देत होतो. पण आता आपण जे काही आंतरविभागीय स्पर्धेचा जो खर्च आपण विद्यापीठ करणार आहे, तिथं खेळाडूंना दैनंदिन भत्ता न देता आपण प्रोत्साहनपर भत्ता देणार आहोत. तो प्रत्येक खेळाडूला 1000 रुपये असणार आहे. त्या ठिकाणी संघ व्यवस्थापक येथील, मार्गदर्शक येथील, त्यांना पण आपण 1000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देणार आहोत. नेक्स्ट स्लाइड. आता जी आंतर विद्यापीठ म्हणजे पश्चिम विभाग, आपण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयात ह्याच्यात एक कक्ष देतो म्हणून आपली पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धा, अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धा, क्रीडा महोत्सव, महाराष्ट्र राज्याचा क्रीडा महोत्सव हा कार्यक्रम आहे. दरवर्षी एका विद्यापीठात हा महोत्सव होतो. ती स्पर्धा खेलो इंडिया, नवीन गेल्या वर्षीपासून चालू झालेली खेलो इंडिया स्पर्धा, यासाठी आपण खेळाडूंना काय काय फॅसिलिटी देत होतो. तर त्यातला आहे दैनंदिन भत्ता. पहिला आपण 250 देत होतो, आता 400 रुपये केलाय. आपण आहार भत्ता आधी 200 रुपये देत होतो, आता 300 रुपये केलाय. स्थानिक प्रवास भत्ता म्हणजे तिथं स्पर्धेपासून जर मैदान लांब असेल तर त्यांना तिथं रिक्षाने जाणं येणं, टॅक्सीने जाणं असं करावं लागतं. त्याच्यामुळे तो आपण आता ह्याच्यात आहे दैनंदिन म्हणजे भत्त्यामध्येच 100 रुपये तो देणार आहोत. आणि एक नवीन Should we stop the share, sir? Yes, Rohit sir, I think he has completed his speech. म्हणजे आपण एका खेळाडूला एका दिवसासाठी पर डे 1000 रुपये आंतर विद्यापीठ, अखिल भारतीय विद्यापीठ आणि क्रीडा महोत्सव आणि खेलो इंडियासाठी आपण देत आहोत. त्याचबरोबर जे आपण टीम विद्यापीठाची निवडल्यानंतर त्याचा सराव होतो, तो सराव ज्यावेळेस चालू होतो त्यावेळेस जे खेळाडूंना 200 रुपये भत्ता मिळतो. आणि जे बाहेरचे आहेत म्हणजे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर जिल्ह्याचे जे खेळाडू आहेत, अशा खेळाडूंना आपण 400 रुपये कॅम्पचा भत्ता देतो. म्हणजे आपण विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार ज्या तरतुदी बदल केलाय तो आपल्या पुढे मी तर तुमचा आवाज हा आता येतोय सर. हा हॅलो, आवाज येत नव्हता सर तुमचा. कधी मध्ये तुटला होता का? थोडासा आता अर्धा सेकंद. हा आता येतोय. हा, माझं जे काय आपण बदल केलेत नवीन ते सर्व सांगून झालेले आहेत. ओके सर, मुलांचे थोडे प्रश्न. हा घ्या ना मॅडम. बॅडमिंटन आणि ऍथलेटिक्स इन्क्लूड करता का? बॅडमिंटन ऍथलेटिक्स ऑलरेडी आपण 70 खेळ खेळतो. मुंबई म्हणजे AI चे एकूण 119 खेळ आहेत, त्यातले आपण 70 खेळ खेळतो. 70 खेळामध्ये बॅडमिंटन आणि ऍथलेटिक्स आहे. Included आहे. Okay. So students, badminton and athletics is included. That is what somebody had asked. Sir, एक दोन मुलांचे हात रेस्ड आहेत. हा विचारा ना. हा काय प्रश्न आहे? Dhruvesh, you want to ask a question? You can please go ahead and ask. You have raised your hand. Sir, can you speak in Hindi or English, please? हा. हॅलो, येतोय आवाज सर? येतोय आवाज. ठीक आहे.
Students, you can, prashna asil, I will just, students, you can ask any question that you have. You can put it in the chat box. Any question that you have? We have enabled the chat. Your hands and ask. Hello, sir. Sandesh Pawar, do you have a question? Hello, ma'am. Yes, Sandesh, please go ahead and ask. हॅलो. Hello, ma'am. Yes, please ask your question. Pranav Salunke, please ask your question. अमरुळे सर, अशी कुठे लिस्ट आहे का की कुठले खेळ इन्क्लुडेड आहेत वेबसाईटवर किंवा कुठे? आपल्या विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर आहे. विद्यापीठाच्या, ओके, स्पोर्ट्सची वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईट आहे, त्याच्यावर आहे. ओके, सो स्टुडंट्स, हा सगळे खेळ आहेत ते वेबसाईटवर आहे ना? ओके सर. स्टुडंट्स, सर इज सेइंग खेळ आहेत का? काय काय फक्त सांघिक म्हणजे संघ त्यांचे खेळ आहेत का? फक्त म्हणजे धावणे वगैरे असे सेपरेट पण आहेत? आहेत, सगळे खेळ आहेत. वैयक्तिक खेळ आहेत, टीम इव्हेंटचे पण आहेत. ओके सर, थँक्यू सर. सर काही स्पोर्ट्स Ma'am, इव्हेंट आहे आता का ते- कमिंग अप, असं विचारलंय मुलांनी. काय 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 स्पोर्ट्स कुठला आता स्पोर्ट्स इव्हेंट आहे का ऑर्गनाइज्ड? नाही मॅडम, कोविड सिच्युएशन असल्यामुळे आपण कुठल्याही स्पर्धा घेतलेल्या नाहीत यावर्षी. फक्त सिलेक्शन ट्रायल्स, म्हणजे जे मुलं स्टेट लेवल खेळले आहेत टीम इव्हेंटचे, त्यांच्या ट्रायल्स घेऊन आपण इंटरव्ह्यूला टीम पाठवत आहोत यावर्षी फक्त. कोविड सिच्युएशन आणि जे आपले वैयक्तिक खेळ आहेत त्यांचे मात्र डिव्हिजन लेवल पासूनच्या मुलांना आपण इन्क्लूड करतोय आणि त्याच्यावरून बेस्ट प्लेअर आपण इंटरव्ह्यूला पाठवतो. यावर्षी कुठली कॉम्पिटिशन घेतलेली नाही, आपण घेणार नाही. Okay, sir. So students, I hope you understood what he said. He said this year because of COVID, there is no event which is organized, but selections are going on for individual as well as team games. Okay. Some hands are raised. Sachin, do you want to ask a question? Sachin? ज्योतिराम? ओके सर, हे जे तुम्ही सगळं सांगितलं हे युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर आहे का? सगळे वेबसाईटवर आहे. सर्व परिपत्रक आपली वेबसाईटला असतात. मैम, परिपत्रक मैम पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग भी है क्या अपने कॉलेज में? हेलो मैम. सचिन, ये यूनिवर्सिटी लेवल का है? लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है. वेट लिफ्टिंग इवेंट खत्म. हेलो, वेट लिफ्टिंग है बोल रहे हैं सर. सर बोल रहे हैं वेट लिफ्टिंग है. ओके मैम, पावर लिफ्टिंग नहीं है क्या? Sachin, I request you, if you go to the university website, you will see the list of all the things which are available. Okay. Okay ma'am, okay. You will not have any doubt that way. Yeah. I think all the procedures would be there on the website, and I'm sure there will be a contact us address also. So you can just write an email and you will get a reply. Okay. To whatever, sir. I think we are running out of time now. Time is almost up. So आज मोहन अमरुळे सर, आपने हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे जो स्पोर्ट्स का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं और खिलाड़ियों को कौन से भत्ते मिलते हैं, ये चीजें बताई है. यूनिवर्सिटी इसमें कैसे सपोर्ट करती है और कॉलेज को कहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, ये भी आपने बताया है. कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे आपने बोला ये सारी चीजें आपके वेबसाइट पे है, यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स सेल के वेबसाइट पे है. तो जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन टेक अ लुक. ओके. मोहन सर, थैंक यू वेरी मच. आपने ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया.
काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि वो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मुझे आशा है कि वो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स खेळते हैं वो इसका लाभ जरूर उठाएंगे. थँक्यू सर, तुम्ही वेळ काढून आमच्यासाठी या सेशन मध्ये आलात आणि हे इन्फॉर्मेशन मुलांबरोबर शेअर केलं. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Mohan Amrule sir. Thank you so much, and thank you, Gauri ma'am. Thank you so much. थँक्यू सर. And welcome to this session 2 and session 3 of Universal Human Values UHV 1 day 4. Today is Friday, 11th of February 2022. Yes, Sandesh Pawar. Yeah, Sandesh Pawar, your hand is raised. Yes. Sir, please send a link of a website, Mumbai University. Yeah, you just check on the website. Hello? Yeah, we'll put on the chat. Okay, don't worry. Okay, sir. Thank you, sir. Put on the chat. Okay. Thank you. Thank you so much. So we now just on session 2 is on respect, right evaluation of intention and competence by Nidhi Sajade and Vinay Chidri. And then we'll have the bio break between 5:30 to 5:45, which will be handled by Anita ji and Yashwant ji. And then we'll have the session 3 of day 4 from 5:45 to 6:45 on affection and reverence, done by Umesh sir, and Anupama ji will be the backup. These sessions are again related to the relationship. On day 1, we talked about the holistic part of education. Day 2, we talked about self and body, how to understand both these components of a human being. And yesterday, we talked about very important aspect of health and trust. So today day is on the more aspect of relationship. So now with this, I invite, we invite Nidhi Sajade ma'am. Just a minute, I'll just go through the next important aspect of the help desk. I hope all of you know that. And then comes, we still see some nicknames like iPhone and all that. This is the 4th day. Please change the name, otherwise we will have to take some other strong action on that. So please change your names to your names, because it's not the 4th day running and still we find participants having their nicknames and numbers and all that. So please change it, because we want to identify by name and surname. Next, use chat only for responding to questions asked by resource person. Don't write anything else on chat. Everything is recorded. Everything is getting monitored. So when the decision is taking about what to do further, all the aspects will be taken. Next is that we again request all of you to look at the poll on your screen and not to write on chat. When the poll comes on the screen, reflection comes on the screen, please respond to the 3 or 4 options that are given there. Please do not write on chat. It's very confusing. We are finding that yesterday was a little better than previous days. 64% people responded, but we want more people to respond, because all this is taken together. Your assignments, your polls, your question answer, how you do reflections, and how you come and interact with the resource persons. All these are going to be looked after by the authority of University of Mumbai. So please respond to the polls. And whenever you ask questions, please raise your hand. It's very important for you to ask questions, because even that is also monitored regularly. Right now, no hand need to be raised. So we will not be entertaining any question now. We'll be moving to the session immediately. Okay, so with this, I invite Nidhi ma'am. I'm stop sharing. You can share the screen. Yes, over to you, ma'am. Yes, good afternoon, sir. Visible and audible, yeah. Ji, namaste. Good afternoon, all. I welcome you all for this session today on universal human values. I hope yesterday's discussion must have been given for you the points to explore within yourself, so that now we start understanding the relationship people around us. Let me just put in front of you about what we discussed yesterday. So briefly, we talked about the health, and the second session was about the relationship.
So with the first session, when we were understanding the health, it is important for us to look at the self, that is this feeling within the self of self-regulation towards the health of the body. So if there is clarity within the self, the outcome would be health. And second session, we started understanding the harmony in the family. We started understanding about relationships, and we were able to understand this relationship is between one self and the other self. So now, when this first foundation feeling we were discussing, so trust is to have the clarity that the other wants to make me happy. ये आश्वस्ति हमें जब होती है कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, इंटेंशन जब हम दूसरे का देख सकते हैं, तो ये दिखता है ना, हर एक व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को सुखी करना चाहते हैं। क्या कर पाए वो तो कंपीटेंस है। हमने अपने आप को भी ऑब्जर्व किया, हर बार हम कुछ डिसाइड करते हैं ना और सोचते हैं कि इससे हम हैप्पी होंगे, तो करने जब जाते हैं तो एज पर आवर कंपीटेंस वी मे or may not be able to complete that thing. We may or may not be able to fulfill that. So with this, we are able to see intention and competence of myself as well as the other person. And then I have this clarity about the intention of the other. So with this, today we will be discussing about this feeling of respect, सम्मान, we call it in Hindi it as. तो आज जो हम बात करेंगे राइट इवैल्यूएशन की, कैसे इंटेंशन और कंपीटेंस का राइट इवैल्यूएशन करें, एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इश्यूज लाइक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो, डिप्रेशन, peer pressure, differentiation, like this. So are you all ready? Shall we start? Yes or no? Good to see that. Okay. तो आज हम जो चर्चा करेंगे ना, it will be on the respect, and we have been able to explore this feeling of trust, that my natural acceptance, that is intention, is to be happy and make the other happy. The natural acceptance of the other is also the same. ना अभी हम बात कर रहे थे क्या करना चाहते हैं और क्या कर पाए. So we both have different competence. We both may be lacking in competence. So now we have to make a program with each other essentially on the basis of our present level of competence with trust on the natural acceptance, that is intention. ना तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, by evaluating the competence at present level, we can see na, what we can do with each other. We can have a program, but having this clarity that this intention part for both of us is similar. We have also seen that we try to get this respect from others through clothes, or for example, if somebody is speaking fluently in one of the particular language, we may say we have respect for the person. We may be feeling that money gives us the respect. हमें लगता है कि जितना status ज़्यादा होगा उतना respect मिलेगा, है ना? But it doesn't seem to work most of the time. ऐसा हो सकता है क्या ना, कपड़ों की वजह से, भाषा की वजह से, पैसों की वजह से, स्टेटस की वजह से ये कंटिन्यूटी ऑफ रिस्पेक्ट इंश्योर हो सकती है ना. तो आज हम इस सेशन में उसी पर बात करेंगे. वी विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग ना, एंड वी विल सी
if understanding respect is a solution to all the issues which were mentioned. Bhaiya, can we have a poll here? तो आज जब हम ये रिस्पेक्ट और सम्मान की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है? आपकी स्क्रीन पर पोल है. डू यू थिंक रिस्पेक्ट कैन बी डिफाइंड विथ डिफाइनाइटनेस? ना, इस सम्मान के भाव की चर्चा हम कर सकते हैं क्या डिफाइनाइटनेस के साथ? निश्चित हो सकता है क्या? या फिर हम कहते हैं कभी रिस्पेक्ट नहीं, ऐसा होता है ना? वो हम जरा चेक कर लें. By the time some of our participants can raise hand and can share about their experience as they were doing the assignment, or what clarity they got after the exploration on the feeling of trust. And Bhaiya and Didi, we can also look at the chat on YouTube as well if there are any questions or reflections particularly. For this particular poll, kindly answer in the poll itself. Do not reply in the chat. The chat is at the present for putting up your reflection or question. ठीक है? हाँ, तो आप में से कई लोग कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट को डिफाइनाइटनेस के साथ डिफाइन कर सकते हैं. 28% are saying no, और 10% कह रहे हैं we don't know, we cannot say. ठीक है? तो we will see whether it is possible to talk about this feeling of respect with definiteness. That we will just check. So the proposal for you to explore is respect equal to right evaluation. तो जब इसे हिंदी में कहते हैं सम्मान ना, उसको सम प्लस मान ऐसे कहा गया है. तो सम का मतलब है सम्यक, मान का मतलब है मापना. हाँ, तो ठीक ठीक आकलन करना ना. जब हम किसी व्यक्ति का और हमारे खुद का ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं ना, उस व्यक्ति विशेष का कुछ आकलन करते हैं, तो जो फीलिंग है मुझ अपने आप में, उसे कहा गया है सम्मान ना. आज तक हम ऐसा कह रहे हो कि ना हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, हर वक्त रिस्पेक्ट होना चाहिए, हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा हम कहते हैं ना. बट नाउ वी विल लुक इनटू दिस राइट इवैल्यूएशन. ठीक है? तो अब जब इस राइट इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना, ठीक ठीक आकलन करने की बात कर रहे हैं, तो हम किसी व्यक्ति का या अपने आप का भी आकलन कैसे कर सकते हैं? जरा बताइए. तो आप चैट बॉक्स में या अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं. हम राइट इवैल्यूएशन कैसे करें? राइट कैसे हो इवैल्यूएशन? कुछ ओपिनियन आप बना पा रहे हैं? हम कहते हैं कि हम बड़ों का रिस्पेक्ट करें, है ना, हम ऐसा कहते हैं. तो बड़ों का रिस्पेक्ट करें मतलब क्या होता है? क्या हमें उन्हें गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए ना, जब भी टाइम हो उस हिसाब से विश करना चाहिए? या फिर हमें उन्हें ना चरण स्पर्श करके भी विश कर सकते हैं, हम उन्हें प्रणाम कह सकते हैं, नमस्ते कह सकते हैं ना. तो इज इट द राइट इवैल्यूएशन? हम इवैल्यूएट करते हैं मतलब क्या करते हैं? अच्छा, आप यस नो ऐसे टर्म्स में लिख रहे हैं. एनीबडी वुड लाइक टू इंटरैक्ट? चैतन्य जी, चैतन्य काळे, do you have something to share as we talk about this feeling of right evaluation? Yes, your hand is raised. Our actions which are according to our right principles create respect. Hello ma'am, am I audible? हाँ, now you are audible. Please go ahead.
I want to say regarding the respect of every person, that each and every person should get a proper respect regarding everything, because to get, it is said that give respect and take respect. So according to me, everyone should get proper respect. And if you want to gain something, means new knowledge about anything, then we must always give a proper respect and should means behave in a polite way and should talk in a very concise way. That's I want to say. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। ठीक है ना, आपका इनपुट हम कंसिडर करते हैं और आगे सुनते हैं फरीन सैयद से। फरीन जी, आपके पास भी माइक है, आप अपना रिफ्लेक्शन शेयर कर सकते हैं। दीदी, चार्ट में एक चार्ट है, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट्स जस्ट अर्न बाय आवर डीड्स। मिस्टर अथर्व Vinay ji or Nidhi ji. Hello. Vinay ji, you have to unmute the participant when he raises hands. Yes. Because sir. that Hello? feature is not there automatic speaking. Okay. Yeah, Vinay ji, please go ahead. I'm asking them to unmute, sir. Fareen, please go ahead. Hello, ma'am. Yes, sir. Ma'am, actually, most of the time, respect is misinterpreted as fear. So, can you share your opinion regarding that too? Okay. When we have this fear for someone, okay, can you give example of anyone for whom do you have this feeling of fear? Just for an example, like your parents or grandparents. Is it so? Or someone who is at the higher post and you have some fear for the person? Yes, Fareen? Fareen, you will have to unmute so that we can interact. Okay. So what we will do, we will keep Fareen's question open. Yes, Fareen. Yeah, it's like someone with like we have some colleagues with us and we do something out of, or someone elder in our surrounding, and we do out of respect anything out of respect, but they feel like, oh, she got afraid and that's why she's doing that, but we do it out of respect. So that's what I'm telling. Yes, so you are afraid and you are saying that is the feeling of respect. Okay, so when you have this fear for someone, do you think you have rightly evaluated the person? Okay, you can think over it. And now when we are talking about this right evaluation, we are talking about evaluating a person or ourselves generally be there. That we will first of all see. What we are saying is respect is right evaluation, but the common mistakes which we generally do are that we over evaluate. Okay, so this over evaluation is to evaluate for more than what it is. So for example, okay, you and your friend, okay, you both are interacting, for example, and you have a good mood. You could do your assigned work in time. So at the end of this day, you are interacting with your friend, you are at peace within yourself. So your friend says, अरे तुम्हें वो जो असाइनमेंट चाहिए था ना लास्ट वीक, मैंने वो प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, मैं आउटपुट भेज दे रहा हूँ, जरा देख लेना, ठीक है क्या ना? यू हैड गिवन दिस वर्क टू मी और मैंने उसे लास्ट वीक ही कंप्लीट कर लिया है, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। सो यू कैन ऑब्जर्व ना, ऐसा जब इंटरेक्शन चल रहा है, आपके फ्रेंड ने आपने जो कहा था वो काम कर दिया है, and it was actually important for you to complete it. So what would be your response for your friend? You might say, wow, wonderful, बहुत अच्छा काम किया ना, आप तो दुनिया के बेस्ट पर्सन हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, दुनिया के बेस्ट पर्सन हो, इसीलिए आप ऐसे काम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हो ना. So do you think
by evaluating a person as world's best person, I did the right evaluation of that person or my friend? Yes or no? You are interacting with your friend and you said to your friend that आपने बहुत अच्छा काम किया, आप दुनिया के बेस्ट पर्सन हो, तो ये आपने उनका सही इवैल्यूएशन किया या ओवर इवैल्यूएशन किया? R और O in the chat box. R for right evaluation, O for over evaluation. Okay, आप सभी लोग लिख रहे हैं O. So when you are saying you did this over evaluation of a person, of your friend, do you think if you keep repeatedly saying this to your friend, आप तो दुनिया के बेस्ट पर्सन हो, the person will be comfortable? ऐसा हो सकता है क्या उनके लिए कंफर्टेबल हो सुनना बार बार? अच्छा नहीं है ना? आपके लिए कैसा होगा अगर आपके फ्रेंड ने आपके लिए सेम बात कही हो, कहा हो कि आप तो दुनिया के बेस्ट पर्सन हो, आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में? So Tanya is saying it will be uncomfortable, ना? ठीक है. So this over evaluation can be uncomfortable for us as well as the other person. Okay. The other kind of evaluation which we may be doing is under evaluation. To evaluate for less than what it is. ना? अब वही फ्रेंड है आपके साथ, 2-4 दिन बीत गए हैं, बहुत स्ट्रेस्ड, आपको लग रहा है कि कॉलेज में बहुत सारा काम पेंडिंग है ना, और आप उसको ठीक से कर भी नहीं पाए थे कंप्लीट, और ऐसे ही कुछ इंटरेक्शन हो रहा था, आपने अपने फ्रेंड से कहा था कि मेरे लिए ये काम कर देना, मुझे कुछ है ना राइटिंग मटेरियल चाहिए, जरा ला देना, एंड द पर्सन डिड नॉट ब्रिंग इट. आपने कहा यूजलेस हो. कितनी बार कहा है मैं अगर आपसे कोई काम कहूं तो आपको तो वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, पर देखो यूजलेस हो, काम भी पूरा नहीं किया ना. तो बाय सेइंग दिस, एम आई evaluating my friend rightly or I am doing under evaluation of my friend? हम क्या कर रहे हैं, under evaluation और right evaluation? ठीक है, आप बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हो. अभी देखिए है ना, आपने जब आपके फ्रेंड को कहा यू आर यूजलेस ना, डू यू थिंक योर फ्रेंड वुड बी कंफर्टेबल स्टेइंग अराउंड यू? और अगर यही बात आपके फ्रेंड ने आपसे कही होती क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर पाए, आप खुद भी ऑक्यूपाइड थे और कुछ काम नहीं कर पाए, अगर उन्होंने आपसे कहा ना कि यूजलेस हो, कभी भी काम टाइम पर ही कंप्लीट नहीं करते हो, ना कोई मतलब नहीं है, आपसे तो काम कहना ही नहीं चाहिए, बेकार है, डू यू थिंक it will be comfortable for you to hear this? Okay. The other form of evaluation which we may be doing is otherwise evaluation. To evaluate for other than what it is. ना? फिर आपके ही फ्रेंड है साथ में, ऐसे ही कुछ सिनारियो हो गया, उनसे कुछ काम करने में गलती हो गई, काम तो उन्होंने किया लेकिन गलती हो गई, ठीक से पूरा नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए थे इसलिए पूरा भी नहीं कर पाए. अब आपने कहा उनसे, गधे हो क्या, ऐसे भी कभी कोई काम करता है, इतना सिंपल काम है और आपने ऐसे कर दिया ना. एक ह्यूमन बीइंग जो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हैं, उन्हें मैंने किसी एनिमल के साथ नाम के साथ बुला लिया ना, तो क्या मैं सही सही आकलन कर रही हूँ मेरे पर्सन का, मेरे दोस्त का मैं सही आकलन कर रही हूँ? ठीक है. So this otherwise evaluation
or under evaluation or over evaluation if you do for other person, or the other person is doing for yourself, will it be comfortable for you? हम human being हैं, we were able to see that we are coexistence of self and body, ना? तो एक महत्वपूर्ण अदरवाइज इवैल्यूएशन जो हम जनरली करते हैं, we call ourselves body. We treat the other person as if the person is only body. Do you think it is the right evaluation of a person or otherwise evaluation? ह्यूमन बीइंग अगर सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है और हमने ह्यूमन बीइंग को सिर्फ बॉडी की तरह ही ट्रीट किया है, तो क्या ये भी सही आकलन है? Is it the right evaluation? And as you said, no, it will not be comfortable for us as well as the other person. But what do you think? What will be naturally acceptable to you? Doing right evaluation of yourself and the other, or doing these three forms of evaluation? Ensuring respect, or doing other kinds of evaluation and disrespecting you? Okay, you are saying right evaluation. Huh? So this right evaluation is naturally acceptable to us. Huh? Now the question is how we are going to do this right evaluation, right? So we will be talking about it. But before that, we can just check generally what we are doing. So this over, under, and other evaluation is disrespect. Whenever the evaluation is not right, it is disrespect. If I'm calling a person useless, if I'm calling a person the best person in the world, these both forms are not ensuring respect for the person, but it is, very uncomfortable for the person. Even if you praise the other person for very longer time, or if you keep on criticizing the person, both of these forms are of disrespect. So whenever the evaluation is not right, it is the disrespect. And now we can check, for every interaction of ours with others, whether it is respect or disrespect. We can just memorize, since morning, how we have been behaving with other people who are around us. And we can check what we did. Was it right, over, under, or otherwise evaluation of a person? Bhaiya, can we have a poll here? Okay, so as you are responding for the poll, there are two questions. What you do mostly for yourself? Do you rightly evaluate yourself? And what you mostly do for others? Do you evaluate them rightly or in the other forms? And now we can talk about this, with all of you. You can raise your hand. iPhone 11 Pro. First of all, you tell us your name and then we can interact. Madam, there's a this iPhone person has changed his name. Don't ask him to unmute. Yeah, that's what I also think. Yeah. So you can remove his hand. Oh. Yeah. The man, there's a question from on YouTube from Komal Galande. Over evaluation, is it people are angry? Evaluation, people are angry. Question mark. I don't know what the question means, but that is the thing. Okay, maybe. Yes, ma'am. Maybe she's trying to say that will over evaluation make people angry, like that. If she's saying, then we can check it for ourselves. Even if it is over, under, or otherwise evaluation, right. Will it be comfortable or not? That we have to check. Outcome could be anything. Very nice.
Very nice. जी sir. Very interesting question from Vaibhav Umbarkar. जी. What role does respect play in your relationship with friends and family? Very nice. Yes. As we are trying to understand, we are trying to explore this feeling of respect. No? What do you think if you are able to evaluate yourself and the other rightly, will it lead to mutual fulfillment? अगर आपने evaluation ही नहीं किया, तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, है ना? रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट के लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, वो आप तय कर पाएंगे क्या विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट? That we have to check. And that is why this way we are trying to explore so that fulfilling the relationship becomes easier for us. Very interesting response on chat, ma'am. You can just see that. People are saying no, no, no. Yeah. Yes. हाँ, तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम समझेंगे ही नहीं तो हम फुलफिलिंग कैसे बनेंगे, है ना? और पहले ही जैसे when we started with this universal human values, we started with understanding our basic aspiration, and then we saw how we are going to fulfill it. So in the fulfillment, we saw three things: right understanding about relationship, right understanding about physical facility. So with this discussion, we are trying to explore what is right in the relationships. Yes, I hope it helps you. Yes, हाँ, ठीक है. Okay, बहुत interestingly आप ना अच्छे से उसको देख पा रहे हैं. That is very encouraging. Nidhi ma'am, one more is that it's not so straight, but again from Koman only. All evaluation are people are disrespecting you. I don't understand what she is saying, but Okay, how these three forms of evaluation are disrespect, that is what maybe she's trying to ask. So as I have understood your question, Komal, see why we are proposing it as these other forms of evaluation are disrespect. No? So as you only, can I just complete this one and then we can talk? Okay, ma'am. Okay. Yes, yes. So we are saying that these other forms of evaluation are leading to disrespect means I am not able to see what the person is. So if that is not happening, will I be able to ensure the feeling of respect for that person? That we have to check for ourselves. So no, if I do not understand what it is, then I'm doing this disrespect. That we can check within ourselves, है ना? कोई हमें बहुत प्रेस करता है तो हमें कंफर्टेबल लगता है क्या? भले ही वो हमें बहुत एक्सप्रेस करके कह रहे हो, you are too good, you are the best, no, you are world's best, na? Will I feel comfortable there? Will I feel that the person is doing this, ensuring this respect for me, or will I feel like चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ नहीं रुकना है ना? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो रिस्पेक्ट कैसे? ठीक है. Somebody has unmuted. Will you please continue with your question or sharing? आप कुछ बोल रहे थे? राव सर, हम देख पाए थे क्या कौन थे जो पुट अप कर रहे थे क्वेश्चन को? ठीक है. There is a question in chat box. What is the main reason behind over-evaluation? ठीक है. See, the reason behind over-evaluation is because in our content of imagination, we are not clear about, that particular situation. तो हम अगर excited हैं ना, तो generally हम over-evaluation करते हैं. आप observe करना, ना? I am excited because I got this first rank. And now when I go home, even if my mother has prepared, the meal which she usually prepares, I would say her, wow, mummy, aap to bahut अच्छा खाना बनाए हो. Because I am excited. So when there is this excitement in me, I generally over-evaluate everything around me.
Hope it helps you. ओके ना, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो ये रिस्पेक्ट ही नेचुरली एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी तक तो हम डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. तो वी विल सी ना हाउ राइट इवैल्यूएशन नो plays a role in the self confidence, that we will see. Now see, when I am doing right evaluation of myself, now it may be the thing that the other person is under or over or otherwise evaluating me ना. वो कह रहे हैं ये कौन से कपड़े पहने हैं आपने, है ना, ये तो आजकल का ट्रेंड भी नहीं है. With this comment of someone for me, if I am getting affected, so then other is my reference point ना. फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा कंडक्ट इनडिफाइनाइट हो जाए, आचरण अनिश्चित हो जाए. बट इफ आफ्टर हियरिंग दिस कमेंट फ्रॉम समवन, if I am able to evaluate it for myself, that what I am wearing is comfortable for me, because no, it is as per the season which is there, and I am comfortable in that dress. Okay, so with this I become the reference point for myself. Now I am not getting disturbed because of somebody else's comment over me, and with this, will I now start shouting at the person, or will I get irritated because of the this comment of the other person? So definitely no. Now my conduct becomes definite, as a reference point is myself. Okay, but if we see this over or under and otherwise evaluation, we will see, you can just observe. If somebody is telling you that you are too good, if you have observed it, that since your school days, if teachers keep on telling you कि आप बहुत ही scholar बच्चे हो, ना बहुत intelligent हो, so generally you will observe that the child for whom the teacher is saying, or if I am that child, I will have this feeling that देखिए मेरे जैसा तो कोई नहीं है ना. So I go in this ego. और अब ऐसा हो रहा है, whenever teacher tells me that I am good, then only I feel good. I keep on thinking, आज पूरे दिन में मैंने इतने अच्छे से सब काम किया है, देखिए एक बार भी टीचर ने मुझे कुछ कहा नहीं है. Okay, so the other becomes my reference point, and that may lead to indefinite conduct. घर आ गए, आज पूरे दिन में टीचर ने एक बार भी नहीं कहा कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा. घर आए और मम्मी ने कुछ काम कह दिया. Now will I react or will I have response for her? तो ऑब्जर्वेशन तो यही है कि हमारा कंडक्ट कैसा होगा, इनडिफाइनाइट कंडक्ट. आप लोगों का भी ऑब्जर्वेशन ऐसा है? यू कैन पुट योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स कि अगर कंटिन्यूअसली ना, if somebody is over evaluating you, will you be able to ensure right conduct from your side, or it will keep on changing? आज पूरे दिन में किसी ने कोई कमेंट ही पास नहीं किया, मेरे स्टेटस को बहुत कम लोगों ने लाइक किया ना, मेरा फेसबुक का पोस्ट था, इतना अच्छा कमेंट मैंने लिखा था, किसी ने लाइक नहीं किया. जनरली तो लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं, देखिए आज तो कुछ नहीं कहा. ऐसा होता रहता है. So the other becomes my reference point because of this over evaluation. और अब ऐसा हो सकता है ना, टीचर टुडे टोल्ड मी यू आर गुड फॉर नथिंग, आप इतना छोटा भी असाइनमेंट कम नहीं कर पाए. एंड इफ it may happen that the same comment I received from one of my other friend, or if the same kind of comment I received from my parents, and if I am also not able to evaluate myself correctly, I may go into depression. दूसरे ने बुरा कहा ना, कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं,
शायद बार बार कहा होगा, द पर्सन इज नॉट डूइंग द राइट इवैल्यूएशन फॉर मी, असाइनमेंट ठीक से नहीं कर पाए लेकिन और कुछ अच्छा काम कर पाए होंगे, बट स्टिल नो, इफ आई एम नॉट एबल टू इवैल्यूएट माई सेल्फ वेल, it may lead to depression, and with this the other again is my reference point. कैसे हो रहा है, उन्होंने ठीक नहीं कहा इसलिए मैं ठीक नहीं हूं ना, तो दूसरा मेरा रेफरेंस पॉइंट बन रहा है. and with this also will I be able to ensure definite conduct or indefinite conduct? क्या होगा, एक असाइनमेंट ठीक से नहीं कर पाए थे ना, फिर कमेंट आ गया, तो दूसरा भी असाइनमेंट ठीक से कर पाएंगे या कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन में यही चलता रहेगा, देखिए लोग तो मुझे ऐसे ही कहते रहते हैं, आई एम गुड फॉर नथिंग. We can just observe this. If somebody is doing over evaluation or under or otherwise evaluation for me, and if I am doing the same for the other, will it be comfortable for that person to continue with the interactions, whatever it could be? ऐसा हो सकता है क्या? But if I become the reference for myself after getting these comments from other, if I am able to rightly evaluate myself, will I be able to ensure self-confidence within me? That even if this particular work I did not do well, but now after evaluation of my competency, if I now start working well, will it create better things? That we have to see. तो देखिए ना, assumption है ना, दूसरा अच्छा कहेगा तो ही मैं ठीक, दूसरे ने बुरा कह दिया, I am not okay. So with this there may be disharmony within with both of these options, क्योंकि मान कर रखा है ना, assumption है, दूसरे ने कहा तो ठीक, नहीं कहा तो नहीं ठीक, तो हम खुद कंफर्टेबल है क्या ना, I am in disharmony within, will it lead to tension? और हमेशा अगर ऐसा ही हो रहा है that sometimes there is over evaluation by parents, but from friends there is under or otherwise evaluation. If this is happening, will it lead to frustration and depression? That we have to see. ना? तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये जो zigzag वाला डायग्राम अभी दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, कभी ओवर इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ईगो में है, कभी अंडर इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो डिप्रेशन में है, और अगर ऐसे ही चलता रहेगा, will I be able to ensure this self confidence within me, or will I remain frustrated? That we have to see. हाँ, एक एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से. मैंने ये एग्जाम्पल वर्कशॉप में उमेश सर से सुना था, एक लड़की का. This girl enrolled herself in a graduation program. क्लास 1 से लेकर 12th तक हमेशा फर्स्ट आती थी ना. उनके भाई बहन है घर पे, पेरेंट्स हैं, तो हमेशा जो भी गेस्ट घर में आते थे ना, उनके सामने हमेशा पेरेंट्स उसको प्रेस करते रहते थे ना, कि ये देखिए ये एक हमारी बेटी है, हमारा नाम रोशन कर रही है. और भाई और बहन जो थे वो एकेडमिकली एवरेज स्टूडेंट्स थे, बट शी यूज्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास. फिर ग्रेजुएशन के लिए उन्हें दूसरे सिटी में भी भेजा गया, तो ना जितने भी बार वो घर आती थी, पेरेंट्स हमेशा बहुत प्रेस करते थे, कहते थे घर पर आपको कोई भी काम नहीं करना है, आपको हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है ना. तो ऐसा होता था कि हर सिबलिंग्स यूज्ड टू फील वेरी बैड, उसको इतना प्रेस कर रहे और हमें नहीं कर रहे ना. तो विद दिस दे स्टार्टेड शेयरिंग विद देयर पेरेंट्स कि दीदी को आप कभी भी काम नहीं बोलते हो ना, उनको हमेशा पढ़ाई के लिए बोलते रहते हो, आपको सच में पता है क्या दीदी पढ़ाई ही करती है या नहीं.
This kind of thing they started sharing with their parents. तो है ना, बार बार सुनने के बाद पेरेंट्स को भी लगा कि ऐसा ना हो जाए कि वो इतना पढ़ रही है तो घर का काम ही ना जाने, तो दे स्टार्टेड इन्वॉल्विंग हर इन डूइंग हाउस होल्ड. फिर ऐसा कहते थे जब भी नेक्स्ट टाइम वेकेशन में आती थी तो कहते थे कि बहुत हो गया पढ़ाई, अभी थोड़ा काम भी कर लो. सो इतने दिन तो हो रहा था ओवर इवैल्यूएशन ना, ईगो में थी. और फिर अचानक से अगर कह रहे हैं कि अभी आपका पढ़ाई का थोड़ा फोकस है ना, यहाँ पर भी कर लो घर में काम के लिए ना, तो हो सकता है कि ना द गर्ल माइट नॉट हैव बीन एबल टू maintain herself. She might be feeling depressed, and with this her grades started falling. मार्क्स भी कम मिल रहे थे, ऐसा हो रहा था कॉलेज में. एक तो सिटी से दूर है, घर से दूर है, हॉस्टल में रहते हैं, तो इफेक्ट हो रहा था. एंड विद दिस ये जो हमेशा से ओवर इवैल्यूएशन होता रहता था, और अब कम मार्क्स की वजह से अगर अंडर इवैल्यूएशन हो रहा है, तो क्या लगता है आप लोगों को, विल इट बी पॉसिबल फॉर दैट गर्ल टू एंश्योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर वो डिप्रेस्ड रहेंगे? बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया है, बट क्या लगता है आप लोगों को, अगर ऐसा होता रहा ना किसी भी एक चाइल्ड के साथ, किसी भी एक पर्सन के साथ, will the person be able to maintain herself or himself in the self confidence, or will have this feeling of depression ना? तो ये हमेशा से जो हम ओवर या अंडर इवैल्यूएशन करते हैं ना, it might lead to suicidal thoughts in a person ना. सोचते रहते हैं कि हम बहुत ग्रेट हैं, और फिर अचानक से आके कोई कह देता है कि नहीं नहीं इतना भी ठीक नहीं है, नॉर्मल बॉय है, नॉर्मल गर्ल है, ये तो इतना भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं. तो ये जो ईगो, डिप्रेशन है ना, ये जो साइकिल अगर चलता रहा किसी भी पर्सन की लाइफ में, तो डिप्रेशन के बाद ऐसे ख्याल तो आ ही सकते हैं ना. आपने ऑब्जर्व किया है ऐसा? हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? ऐसा होता है? और क्या ये सही है ना कि दूसरों के ओवर या अदरवाइज इवैल्यूएशन करने की वजह से ना हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दे, हमारा कंडक्ट बदल जाए, हमारा आचरण चेंज होता रहे? ये राइट नहीं है, है ना, आप कह रहे हैं. ठीक है ना? तो अब देखिए, हम चाहते तो हैं कि हम राइट इवैल्यूएशन करें, है ना, क्योंकि हमें यहाँ रहना है डिफाइनाइट कंडक्ट में, हमें अपने आप को, खुद को रेफरेंस पॉइंट बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चलना है ना. डू यू थिंक दिस इज व्हाट इज वी डिजायर फॉर? हम ऐसा ही डिजायर करते हैं कि हम राइट इवैल्यूएशन कर पाए. ठीक है ना. अब बताइए, अगर राइट इवैल्यूएशन करना है तो वो किस आधार पर हो? ये राइट इवैल्यूएशन जो है ह्यूमन बीइंग का, सेल्फ के बेसिस पर हो या बॉडी के बेसिस पर हो? आप लोग क्या सोच रहे हैं? हु इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस? हमारा कंडक्ट कैसे डिसाइड होता है? कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन है ना, कहाँ है प्रेजेंट? ये इमेजिनेशन कहाँ चलता रहता है, सेल्फ में कि बॉडी में? अच्छा, आप सभी लोग ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि सेल्फ मेंटेलिटी. अच्छा, सेल्फ के बेसिस पर होना चाहिए, है ना. ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर राइट इवैल्यूएशन करना है तो हाउ वी कैन गो अहेड विद दैट राइट इवैल्यूएशन. So respect, which is right evaluation, if it is on the basis of the self, so then, now I am able to see it for myself. I want to live with continuous happiness and prosperity, है ना. यही मेरा पर्पस है.
मैं जो भी एफर्ट्स ले रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है, उन सभी के पीछे पर्पस तो यही है कि ये हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूअसली इंश्योर हो जाए। अपने लिए मैं ये देख पाती हूँ। आप लोग बताइए, आपका पर्पस क्या है? Do you have this purpose of living with continuous happiness and prosperity? अच्छा, अब ये जो आपने चेक किया ना कि हमें कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ रहना है, ये आपने कैसे चेक किया? ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशन, कहीं से सुना था कि अच्छा हैप्पी होना चाहिए, या फिर आपने ये खुद डिस्कवर किया है? अच्छा, नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अगर हम सभी लोग अपने आप के लिए ये चेक कर पाए दैट वी वांट टू लिव विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो हम सभी का पर्पस सेम है? यस, नो? अच्छा, सागर कह रहे हैं पर्पस सेम नहीं है। अच्छा, ठीक है सागर, ना हो सकता है कि आपने मानकर रखा हो मेरा पर्पस है इंजीनियर बनूं, है ना, फिर एमएनसी में जॉब करूं, एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, ऐसा पर्पस हो सकता है, आप सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर हम बेसिक एस्पिरेशन की बात करें ना, जिस पर्पस के लिए हम कह रहे हैं कि हमें इंजीनियर बनना है ना, जॉब करनी है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, वो सब किस लिए है? अच्छा, दिव्या जी कह रहे हैं बेसिक इज हैप्पीनेस, है ना। तो क्या ये सभी का सेम है? किसी छोटे बच्चे को भी पूछ लिया, एल्डरली पर्सन को भी पूछ लिया, तो सभी का सेम आएगा? यू कैन आस्क देन, ऋषिकेश had said no। ठीक है, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि नो है ना, तो ठीक है, आप जाकर आज 4 या 5 लोगों से तो इंटरेक्ट कर ही सकते हैं, है ना। पूछिए उनको, अपने आप से तो पूछ लिया है ना आपने कि आप अपने लिए तो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं कि नहीं, ना। अभी किसी और व्यक्ति को भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो पर्पस है टू लिव विथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर पर्पस हमारा ये है, लक्ष्य ये है ना, तो what do you think? What kind of program I should have so that living with continuous happiness and prosperity is possible for me? क्या प्रोग्राम हो सकता है ना? Is it necessary that I first understand and then live in the harmony by understanding it at all 4 levels? 4 levels: individual level, family level, societal and nature existence level. If I understand the harmony at all 4 levels, and then if I am able to live according to it, will it be possible for me to ensure continuous happiness and prosperity? So that I am able to see, yes, it is possible. What about you? ना, अगर यही प्रोग्राम आप लोगों के लिए भी है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर सकते हैं? समझने के बाद उसको जीकर देखते हैं ना, समझकर जीने के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी है? ओके, उत्कर्ष इज सेइंग यस, ऑलमोस्ट ऑल आर सेइंग यस। तो हम सभी का प्रोग्राम सेम है अब, क्या ना, पर्पस तो सेम है कि हम सभी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ रहना चाहते हैं, प्रोग्राम भी सेम है ना। सभी को इस हार्मनी को पहले तो समझना होगा, फिर उस हिसाब से ना रहना होगा, ठीक है ना। अब पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो क्या पोटेंशियल दिखाई देता है मैं इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर पाऊं? ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो नाउ आई एम एबल टू सी। अभी मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, सेशन से पहले, सेशन होने के बाद,
ये डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, इज इट गोइंग ऑन विद इन मी कंटिन्यूसली? मुझ अपने आप में मुझे चेक करना होगा, है ना। जब खाना भी खा रहे होते हैं, किसी को सुनते भी हैं, क्लास में भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूसली होता रहता है. Now I am able to check it for myself. Yes, it is going on. I have this desire to understand what is right understanding. Okay, accordingly, I am thinking that what should I do so that this right understanding is ensured within me. I have this expectation that somebody, or some material will help me in understanding it. ऐसी expectation है ना. This is there in me. I hope you were able to check it for yourself too. This was the one tool I have, that potential I have. And the second is, I am endowed with natural acceptance. Every time I ask this question to myself, do you want to nurture or harm? Every time. The number of times I have asked this question to myself, I always get this answer, nurture. फूड सिलेक्शन शायद कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ तो हमेशा नर्चर का ही ऑप्शन मिलता है. आप लोगों को भी यही ऑप्शन मिल रहा है हमेशा, जब भी पूछे, सुबह उठकर, दोपहर में, शाम को, कल, परसों, जितनी भी बार पूछा था, whenever asked, are you getting the same answer? ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना. तो देखिए, I have this potential of imagination within me which is continuous. तो समझने का काम जहां हो सकता है वो कंटिन्यूटी तो है, और नेचुरल एक्सेप्टेंस जिसका रेफरेंस ले सकते हैं वो भी मुझे अपने आप में दिखता है. आप लोगों को भी सेम ऑब्जर्वेशन हुआ? तो हमारा प्रोग्राम अगर, है ना, अंडरस्टैंड करने का है, तो उसकी पोटेंशियल भी हम सभी में, आर पोटेंशियल इज सेम. तो देखिए, पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल ऑफ मी एंड द अदर इज सेम ना. ह्यूमन बीइंग का पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल अगर सेम है on the basis of the self, then this is forming the minimum content of respect. इतना मिनिमम रिस्पेक्ट में इंश्योर हो सकता है कि दूसरा मेरे जैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ. ठीक है ना. हाँ, तो अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं. यू आर पुटिंग क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. भैया और दीदी, कैन यू हेल्प मी in reading the question which is relevant to this particular discussion in time? If you have a question to ask, you can raise your hand. Potential का कुछ input है, but I'm not able to see to it. Question from Gauri Kadam on YouTube. जी. How to maintain our self-confidence? We can maintain our self-confidence by rightly evaluating ourselves on the basis of first purpose, then program, and then potential, and the fourth part is competence. So that we will talk about soon, and then you can see whether you are able to rightly evaluate yourself. Right. Nice. One more is there. I think two more are there. On YouTube, Utkarsha Mishra. Is over-evaluation makes sometimes wrong mindset to others' nature? See, we can. Yeah. जी sir. We can check this every time. This over, under, or otherwise evaluation, will it lead to wrong mindset within me? First of all, हम comfortable हैं क्या? वो हमें check करना है. तो अगर हम comfortable नहीं हैं, है ना, और अगर हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये ओवर, अंडर और अदरवाइज भी दूसरे के लिए भी अनकंफर्टेबल ही हो रहा है ना.
दूसरे के लिए भी रॉन्ग ही इनपुट दे रहा है। ठीक है सर। Yeah. And one more is there, ma'am. Sania Sheikh. That was a very good question. Is it okay to do over-evaluation to make someone feel good? But we can just see na, how much time this feeling good will be there if we are doing this over-evaluation. वो कितना टाइम तक कंटिन्यू रह पाएगा ये हमें देखना है ना। तो हम अगर सिर्फ फील गुड करवाने के लिए कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन भी चेक करना होगा, और ये फील गुड हमारे लिए कब तक है ना कंफर्टेबल रहता है, हमें ये टेम्पररी ठीक लगता है या कंटिन्यूअसली चाहिए, ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर दोस क्वेश्चंस। अभी अगर इमीडिएट क्वेश्चन नहीं है इस पर्टिकुलर पार्ट को लेकर ना, हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव थॉट्स इन पॉजिटिव वे इन आवर माइंड एवरी टाइम बाय रेफरिंग टू आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस एवरी टाइम। अभिजीत सालुंके, आई होप इट हेल्प्स यू, है ना। नेगेटिव थॉट्स मतलब जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमारे लिए ठीक नहीं है वो तो वही है जो हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना। नेचुरल एक्सेप्टेंस से पूछिए रिलेशनशिप या अपोजिशन, तो रिलेशनशिप अगर आ रहा है आंसर हर बार, तो रिलेशनशिप मेरे लिए सुखदायी है ना। तो फिर उस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव थॉट्स आएंगे क्या, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, हर्षदीप has raised his hand. मैम हाँ बोलिए। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। The discussion was about the evolution of friends. Ma'am, my personal opinion is that when you make a friend, you know what kind of a person he is. For example, if you are doing something wrong and he is telling you, friend, don't do this, this is wrong. Hence, I think, madam, there is no extra efforts we have to done for evolution of a friends. हाँ ठीक है हर्षदीप, आप ऐसा कह रहे हैं एज इट इज, जब आप बताते हैं ना राइटली इवेल्युएट करके, तो फ्रेंडशिप में तो बुरा नहीं लगता है, ऐसा आप बोल रहे हैं ना। यू आर सेइंग द सेम थिंग ना। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू, इवेल्युएटिंग राइटली व्हाटएवर इट कुड बी। ठीक है, तो आगे जब हम कंपिटेंस की बात करेंगे ना, तो दैट टाइम यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट क्लियरली। What you are talking about is competence part. No, we'll go there. Okay. Okay. Now see, we said that yes. We said that no, the other is similar to me, or this similarity is there at the level of the self, but there are differences at the level of some other parameters. So as human being, on the basis of body, the age could be different, gender, race, strength could be different, है ना। वो किसी एक पर्टिकुलर रेस से हैं, मैं किसी पर्टिकुलर रेस से हूँ, उनका स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, मेरा कम है ना। तो यहाँ डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिजिकल फैसिलिटी के हिसाब से भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। The other is wealthier than me, having higher post than what I have, or is having the post which is lower than me. तो ऐसे differences हो सकते हैं। Or on the basis of beliefs, if we talk about, I may be saying I am supporting communism. The other person may be saying I am supporting capitalism. No, there could be different sects. I believe in this particular sect, I belong to this particular sect, and somebody is there from the other sect. I have taken admission to Pune University, so set of information which I have may be different than what a student is having information in the Mumbai University. Information could be different. So now we have to check for ourselves. हमारे लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि हम रिस्पेक्ट को एंश्योर करें। रिस्पेक्ट का मिनिमम कंटेंट है कि दूसरा मेरे जैसा है, लेकिन
है ना. In living, what are we generally trying to do? Do we accept the other as being similar to me, or on the basis of these some of the said characteristics, I may say I am different from the other? क्या होता है generally living में, इसे हमें observe करना है ना, with the help of this poll. भैया, can we have a poll here now? अगर आप लोगों में से क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए. It may happen that the chat it is going too fast. We may sometimes miss your question. So Atharva, do you have question? Atharva, Prathamesh Zadhav, you both have mic with you. Atharva ji, Prathamesh ji, बोलिए. Anarji Bhagat, you also have the mic with you. पोल Do you आया have? पोल आया नहीं मेरे पोल नहीं आया है. तो स्क्रीन पर slide 12. Is it slide? Okay, it has come Didi up. 9. Didi 9. Okay, it has come up. You can take the questions, ma'am. Didi, I'm poll asking to log is, out and log in. Asking log out and log in. हाँ. If you are not able to see the poll, you can log out and log in. And Didi, this poll is not what we are talking about. So even if it is not there, let it be, Didi. We can take the responses from the chat, because the question is that in living what we do. अगर पोल जल्दी गया है, no problem. हम जनरली क्या करते हैं वहां हमें ऑब्जर्वेशन रखना है ना. कोई बात नहीं, पोल के थ्रू आंसर नहीं कर पाए तो you can respond it in the chat box. Do we try to accept the other as being similar to me? और हम बोलते हैं कि आप तो मुझसे छोटे हो, आपको नहीं समझ आएगा. इनके पास पोस्ट नहीं है, कैसे समझ पाएंगे ये? इनको नहीं समझ में आता होगा. मेरा पोस्ट ज्यादा है, मैं क्लास में बड़ा हूँ, है ना, मुझे समझ में आ रहा है. ये तो क्या है, किसी दूसरे ब्रांच से है. हम लोगों को पता है इंजीनियर्स को सही क्या होता है ना. हम ऐसा बोलते हैं, हम दुनिया बनाते हैं, इंजीनियर्स क्रिएट द वर्ल्ड, ऐसा बोलते हैं ना. तो हम लिविंग में क्या कर रहे हैं? आप बहुत लोग ए लिख रहे हैं ना. तो क्या ऐसा होता है कि कोई भी, अच्छा, सूर्य कला एज रिटन बी. ओके, ठीक है. जय कुमार इज ऑल्सो राइटिंग बी. गुड दैट यू आर एबल टू फाइंड आउट. हम फर्स्ट आना चाहते हैं, हम दूसरों से अलग कुछ होना चाहते हैं, है ना. ऐसा होता है, या हम हर एक के साथ सिमिलैरिटी के साथ जीते हैं? हाँ दीदी, ये सही पोल आ गया है. Yes students, you can respond through this poll also. ना अभी चैट में अगर आपने लिखा भी है, फिर भी आप पोल के थ्रू रिस्पॉन्स कीजिए और हम बात कर सकते हैं. At this time, you can raise your hand. One hand is raised, but I'm not able to see who it is, Didi. It's Karan Gupta. जी भैया. Yeah. करण जी बोलिए. Yeah. करण Actually, I गुप्ता. want to tell that poll is not visible for me. So Karan, whenever such issue happens, quickly log out and log in, or you can try to first of all find it on the screen. Chat और raise hand का option होता है ना, वहाँ poll दिखता है. शायद वो आपने escape कर दिया होगा. आप अपना रिस्पॉन्स हमारे साथ भी शेयर कर सकते हो करण. जनरली व्हाट डू यू डू? He need to raise hand again. हाँ भैया. Any other student has any question in the chat box, भैया, दीदी, or on YouTube?
it would be better if those who have logged in from Zoom raise your hand and interact. A question on YouTube. In our day-to-day life, lots of times we doubt ourselves caliber. How do we deal with that? Yes. We doubt our caliber because we have taken somebody else as our reference point. So we may be measuring our caliber from somebody else's scale. If we stop doing that, then it would be possible for us to measure our caliber rightly. ना तो हमें देखना होगा how we can rightly evaluate ourselves, ना, और अगर कैलिबर कम लग रहा है तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हम हार्मनी में रहकर करें या डिस्टर्ब होकर डिसहार्मनी में जाकर उसको इम्प्रूव करें. That is our choice. That you can see. I hope it helps you. Thank you, sir. Okay. So most of you were saying that generally you consider yourself as different from others. So now we have to see, when we evaluate on the basis of the self and we are able to see that our purpose program potential is similar, then I'm able to see that the other is similar to me. But there is this fourth parameter, competence, योग्यता. ना पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल सेम है, सुखी रखना चाहती हूं मैं अपने आप को, लेकिन दिन में कई बार ऐसा होता है कि मेरे ही किसी एक्टिविटी की वजह से मैं सुखी नहीं रख पा रही हूँ. तो दैट मीन्स माय कंपिटेंस इज नॉट राइट. पर्पस इज राइट, प्रोग्राम कैन बी ऑप्टेड फॉर, potential is there with me. Now I have to work on competence part. So now in relationship, when I want to ensure respect for the other, now I can see that other is similar to me, that is some part of it. And next is, now on the basis of right evaluation of our mutual competence, हमारी दोनों की योग्यता का आकलन करना है. I recognize our complementarity and fulfill it. ना, मैं अभी तो देख पा रही हूँ कि जब भी मैं अपनी सिस्टर के साथ इंटरैक्ट करती हूँ, जब भी कुछ डिसएग्रीमेंट का पॉइंट होता है, my sister always comes up and says कोई बात नहीं, है ना. अगर हमारा ये पॉइंट है जहां पर हम दोनों एक दूसरे के साथ अग्री नहीं भी कर रहे हैं, we can come up next time, we can put our points very clearly, let's stop fighting over it. I am able to see कि वो मुझसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, मुझसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. तो अब क्या करना होगा? Now I am committed to understand from her. ना, अगर दूसरे की योग्यता मुझसे ज्यादा है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, है ना. मैं कभी भी आपसे गुस्से से बात करूं, है ना, इरिटेट हो जाऊं, तो आपको क्या लगेगा? अरे देखो, ये तो खुद ही गुस्सा होते रहते हैं, इनसे हम क्या समझेंगे, ये कहाँ खुद समझ रहे हैं. लेकिन अगर किसी पर्सन के इंटरेक्शन में आपको ऑब्जर्व होता है that the person is very mature, the person is able to interact responsibly, the person is taking effort in the relationship, so now I see the person has more understanding, उनका competence, उनकी योग्यता मुझसे ज्यादा है. अब मैं क्या करूं? उनसे समझूं, है ना. Now I am committed to understand from the other. तो हम जो कैलिबर की बात कर रहे हैं ना, तो कैलिबर तो कैसे पहले आकलन करेंगे? हम पहले तो इवैल्यूएट करेंगे. अब अगर लग रहा है कि कहीं काम करने की जरूरत है, तो किनसे सीखेंगे? जिनकी योग्यता हमसे ज्यादा है ना. बट इट मे हैपन दैट आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, है ना. दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं दो लोगों के रिलेशनशिप में. कभी एक पर्सन ज्यादा जिम्मेदार है,
तो उनसे हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है ना कि उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका कॉम्पिटेंस इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है, मैंने ये वर्कशॉप किया, मैंने कंटेंट्स को सुना, मैं अभी देख पा रही हूँ कि मुझे थोड़ा गुस्सा कम आ रहा है ना, मतलब मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो in this relationship now I live with responsibility with the other, unconditionally unperturbed by the behavior of the other. उन्होंने मुझे 10 बार पूछा, मैंने उनको 10 बार समझाया, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है ना, तो 11th time without getting disturbed by the person's behavior, now I am ready to facilitate this understanding in the other. पर देखिए, है ना, ऐसा हो सकता है क्या, जैसे सर कल आपसे पूछ रहे थे ना, किसी के लिए अपोजिशन का भाव है तो कभी आप उनकी सुनेंगे क्या? आपको दिख रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बिहेव कर रहे हैं, आप उनका सुनेंगे? यस और नो? लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि देखिए वो तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी ले रहे हैं हर काम की, है ना, घर में भी, बाहर भी, है ना, कॉलेज में भी, तो आपको लगेगा ना कि हाँ दिस पर्सन इज इन हार्मनी, है ना, उनके कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन में हार्मनी है, इसलिए उनका वैसा बिहेवियर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, चलो उनसे समझते हैं। अगर मेरा वैसे ज्यादा हो रहा है ना, आउट ऑफ 10 times वी हैड अ फाइट, आई एम द वन हु वेंट देयर, सेड सॉरी, है ना, मैंने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का कुछ काम किया, तो आई सी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर। तो अब अगर दूसरे के साथ हम अश्योर्ड हैं ना, तो हम दूसरे से समझते हैं। वैसे ही अगर दूसरा हमारे साथ रिलेशनशिप में अश्योर्ड है, तो हम उनमें हमारी ये अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, हमारी योग्यता का आकलन किया। रिलेशनशिप है, 2 लोग हैं, दोनों की योग्यता का आकलन किया। अगर एक का ज्यादा है तो उनसे समझूं, मेरा ज्यादा है तो मैं समझाने के लिए रेडी रहूं, लेकिन कब? when the other is ready to understand, when the other is assured of me in the relationship। उससे पहले होगा क्या, हम बार बार कहते रहेंगे सुनो तो जरा मैं कुछ बहुत अच्छा सिखाने जा रही हूँ, और बिहेवियर में गुस्सा कर देंगे, तो कोई सुनेगा हमसे? एंड दिस फॉर्म्स द कंप्लीट कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट। तो हम कह रहे थे ना, हाउ वी कैन डिफाइन रिस्पेक्ट ना, हाउ एवरी टाइम इट इज पॉसिबल। So when I am able to see that the other is similar to me and now we are complementary to each other। घर में रहते हैं ना, फैमिली में, है ना, कॉम्प्लीमेंटरी, मम्मी है ना, सब घर का पूरा सब काम संभालते हैं ना, पापा बाहर का भी संभालते हैं, कभी कभी दोनों बाहर का भी करते हैं और फिर घर में आके हमारे लिए फूड भी रेडी करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंटरी है ना एक दूसरे के लिए ना। हमारे फैमिली में बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं ना, छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए एल्डर्स बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं और बच्चे फिर उनका छोटा छोटा काम कर देते हैं ना, फिजिकल मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है उनसे कुछ, तो ये ला कर दो, वो ला कर दो। तो यही कॉम्प्लीमेंटेरिटीनेस है ना फैमिली में। आर यू एबल टू सी टू इट? रिलेट कर पा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंटरी, हाँ हारमोनियस बोल रहे हैं, अच्छा कृष मिस्त्री, ठीक है कृष, वेरी नाइस। तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी कब देख पाएंगे, जब हम दूसरे को अपने जैसा देख पाएंगे, और फिर अब हम कॉम्प्लीमेंटरी बनेंगे, है ना। 10 बार उनको काम बोला था, नहीं हुआ उनसे, है ना, तो उनका इंटेंशन है क्या काम नहीं करने का? शायद उन्हें नहीं आता हो करना, उनका उतना योग्यता नहीं है। तो नाउ आई एम रेडी टू facilitate my understanding in them। okay? अब जब हम राइट इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इंटेंशन लेवल पर ना, वी ऑल हैव नेचुरल एक्सेप्टेंस व्हिच इज सेम, वी हैव पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल व्हिच इज सेम। नाउ कंपीटेंस ऑफ वेरियस पीपल में बी क्वाइट डिफरेंट, है ना। यहाँ अगर मैं हूँ, देखिए ये ग्रीन पार्ट कंपीटेंस है, तो 100% में से मेरा कंपीटेंस 55% है, दूसरे किसी का 25% है,
तो अब मेरा कॉम्पिटेंस ज्यादा है तो मैं इनके साथ कैसा बिहेव करूं, है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग उनमें फैसिलिटेट करूं। अगर मैं ही गुस्सा हो गई, इरिटेट हो गई, परेशान हो गई उनसे, तो विल आई बी एबल टू एंश्योर, है ना, रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप? ऐसा हो पाएगा क्या ना? इफ आई एम सीइंग, है ना, फैमिली में देखिए और एक पर्सन है जिनका देखिए कॉम्पिटेंस मुझसे तो कितना ज्यादा है, हमेशा जब भी बात करूं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बात करते हैं, हर काम करने का उनका तरीका जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो मैं अब उनसे समझूं ना। ऐसा तो हो सकता है ना, मेरा कॉम्पिटेंस कम है उनका ज्यादा है, अब चलो उनसे समझते हैं। ये कब हो पाएगा? जब हम दूसरे को अपने जैसा मानेंगे, है ना। लेकिन अगर हमने ओवर इवैल्यूएशन करके रखा है, जैसे किसी ने पहले क्वेश्चन पूछा था ना आप में से कि हमें अगर फियर है, तो फियर है मतलब हमने उनका राइट इवैल्यूएशन नहीं करके रखा है, हमने उनका ओवर इवैल्यूएशन करके रखा है। तो उस फियर के चलते हमसे बड़े हैं, बहुत पोस्ट में ऊपर हैं, है ना, हमने अगर सही इवैल्यूएशन नहीं किया तो उनसे समझने का जो पॉसिबिलिटी एक हो सकता था वो कभी हो पाएगा क्या? विल इट बी पॉसिबल? आई विल ऑलवेज हैव फियर एंड आई विल से दिस इज रिस्पेक्ट. Will I be able to ever interact with them, ever, you know, understand what best they have learned, what best they could do? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा ना. Okay, ना. So what is my takeaway? That this feeling of complementarity is there. The other is similar to me and we are complementary to each other. कोई भी काम घर पर करिए, इंस्टीट्यूट में करिए, कॉलेज में, स्कूल में, अगर हम करेंगे, है ना, इस फीलिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी के साथ, क्या लगता है आपको कोई भी काम बहुत अच्छे से हो पाएगा? Whether it will be possible for us to complete the work with this feeling of complementarity with each other? नहीं हो पाएगा काम. अच्छा, so when we evaluate the other rightly on the basis of purpose, program, potential, and if I am able to see that the other is similar to me, and now we have to see the competence part. आप कितना कर पाते हैं, मैं कितना कर पाती हूँ. अगर आप ज्यादा कर पा रहे हैं, मैं आपसे समझ सकती हूँ ना. If I am able to do more, I can help you in doing that task. I can help you in completing that task with this feeling of respect ensured for you. Are you able to see this possibility? तो रिस्पेक्ट मतलब राइट इवैल्यूएशन दोनों का, इंटेंशन का भी और कंपिटेंस का भी. ओके, ठीक है. Very nice that you are able to see. Now with this, the issue which we were talking about of peer pressure. Now if I am taking this feeling of respect from other, ना आप लोगों ने कहा था give respect and take respect. Okay. So if we are asking for respect from the other, no, we have to always conform to their way of looking things and doing things. ना वो रेफरेंस पॉइंट बन जाएंगे. उनका स्टाइल अगर मेरा स्टाइल होता है तो वो रिस्पेक्ट देंगे. तो रिस्पेक्ट पाने के लिए उनके जैसा स्टाइल करती हूँ, उनके जैसे कपड़े पहनती हूँ. आई ट्राई टू चेंज माई एक्सेंट बिकॉज आई थिंक then only they will be giving respect to me, and this is becoming a major source for peer pressure. So when I have this feeling of respect on the basis of right understanding of human being, as we discussed in the session, then I will have respect for everyone. This feeling of respect for everyone. Purpose, program, potential is same for all. Everyone is included in it, and including myself, है ना. मेरा भी purpose, program, potential similar है, उनके जैसा ही है. Now I am not dependent on getting this feeling from the other. ना अब मुझे रिस्पेक्ट मांगना पड़ेगा क्या? देखिए मैंने आपके जैसे कपड़े, आपके जैसे फैशन के
ट्रेंड्स के जैसा कुछ भी बैग कैरी कर लिया, वैसे कैप पहन लिया, वैसे गॉगल्स पहन लिए, जो भी अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फोन खरीद लिया. नाउ आई एम थिंकिंग people will be giving respect to me. But with this right understanding, now I am not dependent on other for getting this feeling, and hence will not be under pressure to conform to the other. आप कह रहे थे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा हो, कैसे हम इंश्योर कर पाए. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने जैसा जो ठीक लगता है वो करूं ना. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? आई एम एबल टू रेफर टू माय नेचुरल एक्सेप्टेंस. नो, एक फैशन आ गया है, बहुत एक जैकेट पहनना, मतलब कॉलेज में जैसे ट्रेंड आ गया है कि लोग जैकेट पहन कर आ रहे हैं, कैप पहन कर आ रहे हैं ना. गर्मी है बहुत. नाउ आई कैन आस्क माय नेचुरल एक्सेप्टेंस, डू आई वांट टू प्रोटेक्ट और हार्म. गर्मी में जैकेट पहन कर जाएंगे, कंफर्टेबल रहेंगे. Now, who is my reference point? I myself or the other? If I am my reference point, I am able to see that I want to protect the body. I will wear the clothes as per the season, as per the requirement, as per the comfort. I want to engage in classes. I want to attend the classes. उस जैकेट में इतना गर्मी लग रहा है मुझे, मैं बैठ पाऊंगी क्या क्लास में? अब देखिए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे, इतनी गर्मी लग रही है ना, और टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया क्लास में, खुद ही अनकंफर्टेबल है ना. कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन में चल रहा है, कब क्लास एक बार खत्म हो जाए, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है इस जैकेट में यहाँ बैठना. आंसर ठीक से कर पाएंगे? तो नाउ दिस इज हाउ आई कैन एंश्योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन मी इफ आई एम द रेफरेंस पॉइंट. I am the reference point. This I points to the natural acceptance within, right? So I hope now you are able to see to it that that respect will be ensured for myself and everyone around me on the basis of the self. Okay, so to sum up, we can see that when we try to get respect from the other, we have to conform to their way of looking the things and doing the things. And this can become a major source for peer pressure. But when we have this feeling of respect on the basis of understanding of human beings, we will have the feeling of respect for everyone, including myself. I will be able to rightly evaluate myself, even if the other is not able to. Therefore, I don't have to be dependent on getting feelings from the other, and hence will not be under pressure to conform to the other. So respect is right evaluation. But this evaluation is possible only when I have this clarity of the intention of the other. I have trust on the intention of the other, that the other, like me, wants to make himself or herself happy as well as the other happy. This is true for me. So with clarity on trust on intention, now I evaluate the competence part. Now I am able to see the other is like me and we are complementary to each other. Family में जैसा complementariness है ना, वैसा अब हम हर एक के साथ है ना. अगर फैमिली में भी कहीं लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो now with this feeling of respect ensured within me that the other is like me, their intention is true, now we can be complementary to each other. तो ये जो दूसरे फॉर्म्स है ना, अंडर, ओवर और अदरवाइज इवैल्यूएशन, जिसमें हम खुद भी कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा भी कंफर्टेबल नहीं है, सो दिस इज डिसरिस्पेक्ट. एंड डिफरेंशिएशन, व्हेन वी से है ना कि आपको तो आप किसी है ना अलग पोस्ट से हैं, मैं किसी अलग पोस्ट से हूँ, हमारा बैकग्राउंड अलग अलग है, तो दिस डिफरेंशिएशन ऑल्सो क्रिएट्स डिसरिस्पेक्ट. कैसे?
है ना, इस डिफरेंशिएशन की वजह से आई मे बी अंडर और ओवर इवेल्युएटिंग द अदर। ऐसा हो सकता है हम कहते हैं अरे वो बहुत ही छोटा है, उसको नहीं समझ में आएगा, आई अंडर इवेल्युएटेड। छोटा है तो क्या हुआ, कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन तो है, पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल तो सेम है, समझने की कैपेबिलिटी भी है ना। तो अगर सिमिलैरिटी को देखेंगे तो रिस्पेक्ट, बट इफ आई एम लुकिंग एट द डिफरेंशिएशन then it is disrespect. So with this we can go for some questions if there is time. Sir? Yeah, there are 4 minutes as per the scheduled time. If anybody has some questions, you can raise your hand. Yeah, ma'am, there's a question on YouTube. Ji, sir. Yeah, it is Vikas Yadav. Interesting question he has. Why maturity comes after making mistakes? Why don't we learn from others' mistakes? Why maturity comes after making mistakes? Yes, yes. जी सर, as I am able to see to it, हम जब खुद मिस्टेक करते हैं ना तो हम एक्सप्लोर करते हैं ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ ना, so we explore. So this exploration within helps us to gain that maturity. Now there is possibility that I can learn even from others' mistakes if this exploration is going on within me. अगर एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग का है ना पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकता है जी। आई होप इट हेल्प्स यू। We have Swapnil Guru. Hello, ma'am. Yes, Swapnil. Am I audible? Yes, yes, you are audible. हेलो मैम, मेरा प्रश्न है कि जैसा ये ट्रस्ट के बारे में और रिस्पेक्ट के बारे में कि दूसरा कोई एक व्यक्ति को अपने को रिस्पेक्ट दे रहा है पर वो सच में मन से रिस्पेक्ट देना चाहता है कि रिस्पेक्ट दिखाने का एक बहाना कर रहा है, कि ऐसा हम कैसे पता कर सकते हैं ये? हम दूसरे का तो पता नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप का पता कर सकते हैं। हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं ना स्वप्निल, है ना? तो हाँ। रिस्पेक्ट को समझकर अपने आप में इंश्योर करूं ये ठीक है, या दूसरों से मांगू या दूसरों से एक्सपेक्ट करूं ये ठीक है? कौन सा ऑप्शन पे काम कर सकते हैं स्वप्निल? हाँ, हेलो मैम। हाँ स्वप्निल, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, यस मैम। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी, दूसरे के बारे में हम नहीं समझ सकते है ना, लेकिन रिस्पेक्ट मैं समझ जाऊं, मुझ में इंश्योर हो जाए कि दूसरा मेरे जैसा है, उनका इंटेंशन ठीक है, शायद वो है ना मुझे खुश करना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो इंटेंशन तो उनका सही है, तो ये रिस्पेक्ट मुझ में इंश्योर हो जाए कि मैं दूसरों से मांगू ये ठीक है? नहीं, मांगना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना, कितना सही आपने जल्दी से कह दिया है ना, मांगना ठीक नहीं है। तो फिर अपने आप में काम करना ज्यादा बेहतर है कि दूसरों को समझना, है ना, कि वो क्या करना चाहते हैं वो ठीक है? अपने आप में काम करना ठीक है ना, वेरी नाइस। मैं कुछ बोलूं इसमें ग्रो के? हाँ भैया, हाँ। स्वप्निल, ऐसा है बेटा कि जब हम किसी का इवेल्युएट करते हैं कि वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेदर इट इज मतलब वो अंदर से कर रहे हैं, उनके मन में भी उनके अंदर में भी हमारे बारे में रिस्पेक्ट है या केवल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि मैं उनके एक्सप्रेशन से मुझ पर कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को, अपना जो इवेल्युएशन है उसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो एक बात तो यह है कि मैं अपना इवैल्यूएशन ठीक से कर पाऊँ, और तब मैं ये जान सकता हूँ कि उसका जो भी दिखा रहा है, जो भी एक्सप्रेस कर रहा है, उस एक्सप्रेशन को लेके एक तो मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेरे व्यवहार पे, मेरे सेल्फ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अनकंफर्टेबल नहीं होगा, और दूसरी बात कि उसने जो भी एक्सप्रेशन किया है वो एक्सप्रेशन उसके जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या वो
ओवर कर रहा है, ये हमको समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस केस में। क्या पहुंच पा रहा है ये आंसर आपको? सबसे पहले तो हमको अपना इवोल्यूशन ठीक ठीक करना आना चाहिए। स्वप्निल? जी हाँ भैया, आपने ये सही ऐड किया कि हम अपना भी इवैल्यूएशन ठीक से करने पे काम कर सकते हैं ताकि दूसरे से प्रभावित ना हो। कुछ कहना चाहते हैं स्वप्निल? We go to bio break now. Yeah. Sir, can I leave now? Yeah, go ahead. Okay. Thank you. Yeah. थैंक यू भैया। हेलो सर। Yeah, Swapnil. हेलो सर, मुझे समझ में आया आपका आंसर। थैंक यू। Very nice, very nice. ओके, थैंक यू सर। Nidhi ji, thank you so much, Nidhi ji. Very interesting session. थैंक यू सर। Yeah, thank you. We just go to bio break. We invite Anita ji and Yashwant ji. हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को। स्वप्निल, अपना फिर से कोई क्वेश्चन है? Your hand is raised again. He's already answered the question. Okay, no, his hand was raised, so I thought again he has a question. Can I start the session, ma'am? Yeah. You can start the session, ma'am, and Yashwant ji, you can start. हाँ, यस जी भैया। स्टूडेंट्स, अभी तक की जितनी भी मतलब whatever discussion we have done, okay. If you are having any sharing or any question, you can please raise your hand. अभी तक की There is a question, and you take this. Prakash Matre has a question: how to overcome eye contact issues? We have with us Umesh Bhaiya also. If Umesh Bhaiya also can help us out. या दीदी, थैंक यू। इस क्वेश्चन को अगर ठीक से देखा जाए ना कि हाउ टू ओवरकम विद आई कांटेक्ट इश्यू, मुझे उससे एक सेंस आ रहा है कि हम दूसरों से नजरें न मिलाते हुए बात करते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करें? सही है सर। Means even I felt the same way कि I'm not, when I speak to the other person, I'm not able to have eye contact. आई कांटेक्ट, तो शायद ये क्वेश्चन होगा। यस सर जी। अभी ये थ्रू आउट सेशन में एक जो डिस्कशंस बना रहा कि पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल दूसरे का मेरे जैसा है और दूसरा मेरे जैसा है। जब ये क्लैरिटी हम में आती है कि दूसरा मेरे जैसा है, तो उसको अपने जैसा हम समझते हैं, अपने संबंधी के रूप में, अपने रिलेटिव्स के रूप में हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, वो रिलेटेडनेस, कनेक्टेडनेस फील कर पाते हैं और उसके साथ फिर आई टू आई कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम दूसरे को डिफरेंट माने, अपने को डिफरेंट माने, फॉर एग्जांपल जेंडर के बेसिस पर डिफरेंशिएशन हो जाए, या तो फिर पोस्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएशन हो जाए, फिजिकल फैसिलिटीज के बेसिस पर अगर डिफरेंशिएशन हो जाए, तो वो इवैल्यूएशन ठीक नहीं होता। वो कभी अंडर कभी ओवर इवैल्यूएशन होते रहता है, और जिसके चलते ना ये आई कांटेक्ट की जो बात है वो हो सकती है। तो अगर हम अपना ठीक ठीक इवैल्यूएशन कर पाए, हम दूसरे का भी ठीक ठीक इवैल्यूएशन कर पाए, तो दिखता है कि वो भी मानव है। The other is also human being like me. I'm also human being like other. Other also wants to be happy. I also wants to be happy. The other also wants to live with the feeling of relationship, and I also wants to live with the feeling of relationship. So with that clarity, we feel comfortable. We become comfortable talking to others, sharing our right understanding with the right feelings. ठीक है? Yes, please. Students who are available, you all can give your reflection, or you can have any queries, questions.
instead of putting it in the chat box, can you raise your hand so the mic can be provided? Chitran, can you raise your hand? So I think mic can be provided. Yashwanji, there's a question on chat. Ask the person to talk. Tanya Gupta. जी जी. अब Tanya, can you please unmute yourself and ask the question? Hello, Tanya. जी भैया, आप दीदी मतलब Tanya has put one question in the chat box, but even that Priyanshu Sanki. अच्छा. Tanya has asked if someone is talking bad about us, then at how we can prevent us from overthinking and self-doubt then. भैया आप आंसर कर सकते हैं? Shall I repeat the question? हाँ दीदी, नहीं मतलब I have seen. Didi, here if we are able to do our right evaluation, okay, then even if the other person is talking something bad about us, will not do overthinking, or even if somebody is in fact praising to us, even then मतलब उस situation में हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे. So what we need here is the right evaluation for ourselves. Hello, sir. Am I audible? Yes. Yes, Tanya. So I want to tell that even if we know that we are right, but someone is telling us that you are wrong, then how can we prevent it? Because we generally self-doubt on it, that yes, we are wrong. Tanya, see here what they are saying, but if we are able to see that the purpose, program and potential, you can say, for each one of us is same. Now what is happening is that we are able to do our right evaluation, but at the same time, if we evaluate the competence of the other, what we'll find is that they may be having the competence lesser than that. In that case, we can guide them, we can try to improve their confidence instead of doing this overthinking or ourselves being in doubt. Okay, we can help them. Okay, so in this case, they are, you can say they are behaving which is not proper. So it shows that right now their competence is less. Okay, it's not that they wanted to make you unhappy. Okay, their basically natural acceptance is to make us happy because okay, say so our program potential okay is same, but now there is a lack of the competence on their side. So we'll try to have a program, but even for that, first of all, we will behave in a proper way, okay, with the right understanding, okay, in us with right feeling, so that the other person will, we can say, will be able to feel that feeling, okay, we'll be having that feeling, okay, and then he will be, we can say, he will be ready to learn from us, okay. So here, overthinking or self-doubt will not be required in that case. So, but at that situation, they don't listen to us. So what should we do? Because this, but it will be, you can say, in this case, it will be, you can say, it will take some time, but definitely it will happen because that person may be judging us depending upon what has happened previously. Okay. So right now, okay, but
in fact, are you able to see that if we are having the right understanding, okay, if we have evaluated ourselves rightly, okay, then we'll not be having the self-doubt. Are you able to see this one? Yes, sir. Here, because when we are having the right understanding about us, in fact, we'll be in the harmony, okay? So at that point, even if somebody is trying to, you can say, put us, you can say self-doubt, etc., will not be, you can say, affected by this. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So I have a question. Yes, Vibhavi, please continue. Yes. Sir, if someone has trust issues, how can he overcome that? Pardon? Can you please repeat it, Didi? Sir, Vibhavi if is saying someone has trust issues, how can we overcome it? Right, Vibhavi? Yes, ma'am. We have seen of the trust means the recognition that other wants to make us happy. Okay. In fact, if you see, in fact, many times we feel that somebody else doesn't want to make us happy. Okay. That is what you are saying. Yes. Hello. Vibhavi, you have to unmute your mic again. Vaibhavi? Okay, I think she's saying her mic is mute. Okay. Yes, sir, she can Yes, unmute. ma'am. Am I audible? Yes. So, Vaibhavi, okay, I will just try to put the question like this. Do you want to say that, that we have a feeling that other one does not want to make me happy? Is that means there is somebody doesn't want to trust me, or is it like that? Yes, sir. So now, if we see yesterday also, we have seen the trust. Trust, what it means? It means that the other one wants to make me happy. Now, what happens in our case, or suppose if I just ask you, do you want to make others happy? You will say yes. But at the same time, if I just ask you one more question, are you able to make others always happy? That always word is important. And what we find, we are not able to make the other one always happy. Sometimes happy, we are able to make sometimes happy, but sometimes there may be some feeling of opposition. We are not able to make it. But in our case, what it means, our intention is to make the other person happy, but we don't have the confidence. But in our case, we see these two things very clearly, that even if I don't have the confidence, sometimes I fail to make other one happy, but still I'm very clear that I want to make the other one happy. But in case of the other person, what happens, even if he is not able to make us happy even once, we can say that that lack of the confidence we take as the lack of his intention. So we can say we are using the different rule for us. We also fail to make other one happy, but we say we want to make the happy. But in case of the other one, even if fails once, we say that he doesn't want to make me happy. But if we see on the basis of the natural acceptance, because natural acceptance is same for all of us, just as I want to make other one happy, the other one also wants to make me happy. Okay, so that is a trust. We have to see that every time that just like me, other one also will not be able to have that competence. Okay, so I will try to develop my competence so that I can make the others always happy, and also try to help other to improve their competence so that they will be also able to make others always happy. Okay, thank you, sir. Yes, okay, thank you very much. Thank you, sir. So we are done with our bio break. Thank you. We have one question. With that, can you start the session then? Yeah, sure. Sir, Vijayata Sunoni, a mic has been given to you. Can you unmute and ask the question which you had put up? Vijayata, your mic is...
Can you unmute your mic? Hello. Hi, yes, Vijay. You can ask the question and so we'll start. Yes, you are audible. Yes, ma'am. My name is Sujita. Sir, I have a question. If we know we are right, but other one is trying to prove us wrong, or and means like if a friend or someone is trying to prove us wrong and even influencing other people like whom we don't know, who are strangers, but listening to our friend, the others are also feeling no, but this person is wrong, or we are getting judged. So how should we face this situation? How to deal with it? Yeah, that's very interesting. The other wants you to prove that, you are wrong, and you are trying to prove that you are right. So what other is doing, you are doing the same thing. You are also trying to prove, and the other are also trying to prove. So for me also, and for the other also, for both of us, for each one of us, it's very important to know what is right. So something which is right for me, it should be right for those, the others. Then it is right. Then they will also accept it. But sometimes what happens, we assume something to be right for ourselves. And that is not the right thing. So the other doesn't perceive that it is right. This is the whole crisis we have. So each one of us need to understand what is right. What is right? So what is right for myself? With the content, with that feeling, with that thought, if I'm able to ensure this harmony within, it's right for myself. But if it is creating a temporary excitement, does it right for myself? If, with my content, with my sharing, with my feelings, if other is also getting into the harmony, it is right for me also, and it's right for him or her also. But if the other is not, getting into the harmony, then is it right? Is that okay, Vijita? Yes, sir. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Yangesh Tonda. Sir, on the same basis, I wanted to ask this. Like, I had a very good friend circle when I was in 11th, and the exams arrived, and I'm the kind of guy who, like, never copy. Like, I study a lot, and hence I don't need to. But these friends of mine whose roll numbers were just ahead and behind of me, they wanted me to show them answers. Now, I knew that what I am doing is correct, and they were like, no, you should help us and all, and this led to, like, somewhere the friendship just loosened up and then it got lost. So what to do in such a situation when we know that we are right, but everyone else is just about to leave us because we are doing the right thing? Yeah, what does it friendship means? Continuously complimenting each other, helping each other. That is what the friendship is, right? So if I know something, if my concepts are clear than my friends during the classes, and if I help them to understand this concept, then they will appreciate me for my clarity, for my grasping power. They will also appreciate, my efforts, not only to understand myself, but also efforts for helping them to understand. Isn't it? So when we say friendship, are we really helping each other doing the right things by understanding ourselves what is right? Our friendship is just, chit chats and gossiping and parties, fulfilling sensations. So, the moment we understand that the relationship is between self and self, a self is related to the other self. So no matter how much you do for the body, your body and the bodies for the others,
It is just a temporary needs. So are we having this clarity? With understanding feeling of relationship, with understanding relationship, only we can fulfill the relationship. Otherwise, we have also assumed relationship is something, the other also have assumed relationship is, something for them. That's the reason, it's sort of a conditional relationship we are trying to maintain. But then this is a very important question for ourselves, that do I want to have this conditional relationship or continuous relationship? Is that okay? So that is what we have been trying to, discuss, and we have been trying to help you to explore within yourself. That put this question to yourself, verify this proposal. Don't assume whatever we are saying is right, but keep verifying it within yourself, that the relationship is between self and self, or body or body. I have two different types of need, a materialistic need and the non-materialistic need. So the materialistic need, like vada pav and samosas, roti sabji, dal chawal, fruits, clothes, these are all materialistic need. But do I have only materialistic need, or I do have some needs which are non-materialistic in nature, like happiness, respect, trust. Today we talk on affection and reverence. So the need of non-materialist things are the need of the self, which are continuous in nature. So we need to understand how to fulfill the need of the self and how to fulfill the need of the body also. Then we also need to understand what is relationship. Based on understanding what is relationship, we'll be able to live with the feeling of relationship. And that is what we discussed yesterday and just a session before, that the relationship is between self and self, and there are feelings in relationship. So we talked about trust. What is trust? Trust is the clarity upon intentions of each other. My intentions are always good. I always want to make myself happy, and I always want to make other happy. Right? Each one of you has got this intention. I do have the same intention. So what I'm wanting for me and what I'm wanting for you, you are also wanting the same thing for yourself and for me. And that is what the trust is. But then I want to have a fulfilling life for myself. That is what I want, I desire for. But am I able to live that fulfilling life for myself? Am I able to be in a state of harmony every moment? So answer comes, sometimes I'm happy, sometimes I'm not happy, though I want to make myself happy. This is the lack of my competency. So whenever my own understanding, whenever my own feelings are not based upon my natural acceptance, which is always leading to the harmony, I am disturbed with it. And with such disturbance within, I'm not happy. And though I want to make other happy, I'm not able to make other happy at that particular point of time. So it's the same case with other. And this is what the trust is. A while ago, we were talking about respect. So respect is the right evaluation of ourselves. Now, how do I evaluate myself correctly? We have desires, thoughts, and expectations, and these desired thoughts and expectations are continuous in us. So the percentage of our desire, thoughts, and expectations leads to the harmony continuously. That is only the part of competency I have. The rest is all incompetency. So now you can check within yourself
out of all these desired thoughts, expectations you have, how many of your desire, how many of your thoughts, how many of your expectations are leading to the continuity of happiness, the state of harmony within continuously? And how many of your desires are being motivated by preconditioning, just by assuming something, just by believing on something without doing the self-verification with it? How many of your thoughts are stable? How many of your thoughts are disturbing? Right? So all that desire, which are getting motivated by the preconditionings and just only assuming without verifying within yourself. So those desire, the thoughts which are not in harmony, the thoughts which has got confusions, and the expectations, by not understanding the right expectations, all this content of our imagination is our incompetency. So by becoming aware of ourselves continuously, every moment, we can keep evaluating our own competency. And that is what the right evaluation is. So when you are able to do your continuous evaluation, then if the other person evaluate you more than what you are or less than what you are, you don't get influenced by the inputs, because you know what you are, and that is the state of self-confidence. So the state of self-confidence is the state of right evaluation of yourself. Now, when we evaluate others, can we evaluate others on the basis of the body or on the basis of the self? The body has got so much of difference, right? A short body, a long body, a tall body, a young body, a middle-aged body, an older body, a female body, a male body, Indian body, American body. So can we evaluate other on the basis of their self or on the basis of the body? Can we evaluate other on the basis of their degrees or on the basis of the self? Because when you say degree, again, there are a whole lot of degrees. I'm talking about these educational degrees. So there is conventional education, there's the branches of traditional education, there's the branches of professional education. Now, can we evaluate other on the basis of their physical facilities or on the basis of the self? That how many, how much big house is there? What sort of clothes they wear? Will that be evaluation or the evaluation on the basis of the self? So on the basis of the self, if we do the evaluation, that is definite and that is continuous. Rest is all temporary things. So as you are responding in the chat box, the evaluation can be done on the basis of the self. Now, when we do the evaluation on the basis of the self, myself, I want to ensure continuity of harmony. That is what my want is. That is what my purpose is. Now, what you think? Your want is the same or different? Your want is the same as my want? Your purpose is the same as my purpose or different? Do you also want to ensure the continuity of happiness? Very nice, right? So our purpose is same. Now to ensure this continuity of happiness and prosperity within me, I need to understand the whole expanse of my being. And at every moment, I live as an individual, as a member of family, as a member of society, as an unit in the nature and existence. So unless I understand the harmony at each of these levels, I will not be able to live. So to fulfill the purpose of continuity of happiness and prosperity, my program
is to understand the harmony starting from myself to the whole existence and live with this harmony. Then only, I will achieve my purpose. What do you think? You also need to follow the same program or not? You will also become happy by having this right understanding and right feeling within you. So are you able to see that my program and your program is same? Now to execute my program, I have this potential. And what are my potential? These desired thoughts and expectations are continuous in me. Whatever you are doing, right? The content is basically coming from your desire. Something is there in your desire. That's the reason you are able to do it, right? If something is not the part of your thought, will you be able to do it? It has to be there in your thoughts. It has to be there in your feelings, in your desires, in your expectations. Then only it gets reflects into your living. So my potential is these desired thoughts and expectations, which are continuous in me. And I am endowed with natural acceptance. What do you think? These desired thoughts and expectations are going continuously in you or not? This natural acceptance is innate in you or not? Very nice. So our potential is also same, right? So my purpose, my program, my potential, your purpose, your program, your potential is same. You are similar to me. You are like me. And this is the minimum content of respect. The ability to see with the clarity that the other is similar to me. And when you are similar to me, I am similar to you, with this similarity, we can have this relatedness and connectedness with each other. With this clarity only, I accept you. With this clarity only, you can accept me. And then once we accept each other, then we become relatives, which means we are related to each other. And when we accept each other as similar to each other, then it becomes my responsibility to help you in understanding. If I have more understanding, it also becomes your responsibility to help me in understanding if you have more understanding. And this is what the life is. This is what the living is. This way, each one of us can develop this right understanding and right feelings within ourselves. And we can also help other in the development of their right understanding and their feeling. So this much we have discussed, the trust and respect. So once you are assured that the intentions of the other is same, the other is similar to you, this is affection. इसी को कहा जाता है स्नेह. What is affection? The feeling of being related to the other. Now ask this question to yourself. If you are not having this feeling of being related to the other, can you have affection? So the affection is the feeling of being related to the other. The acceptance of the other as one's relative. The other is like me. My mother is like me. My father is like me. My brother is like me. My friends are like me. My sister is like me. So when we are able to see that they are like me, we accept them as our relative. But all those moments when we are not able to see that they are like us, we have this opposition for them. It might be a momentary opposition for a few seconds, for few minutes, for few hours, few days. But whenever we have this
you have this feeling of opposition within yourself at that particular moment of time, what do you think, that this affection is there or it's not there? So feeling of affection is the feeling of being related to the other. And this feeling of affection can be developed with trust and respect. Is it possible to have affection without trust and without respect? Is it possible दूसरे को अपने संबंधी के रूप में, अपने स्नेही के रूप में, अपने रिलेटिव के रूप में विश्वास ही नहीं है और सम्मान ही नहीं है तो स्वीकार भी कर पाना, ये पॉसिबल भी है क्या? तो जब हम एक दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं तो एक दूसरे के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है. I accept you as my relative, you accept me as my, your relative, then I have certain responsibility towards you, you have certain responsibility towards me. I have commitment for the mutual fulfillment in the relationship, you also have commitment for the mutual fulfillment in relationship. And this is what the affection is. So affection is the responsibility and the commitment for mutual fulfillment in relationship with clarity that the other is like me, and the acceptance that other is one's relative. Now, if there is opposition, there is jealousy, can you have a feeling of opposition and affection, both the things at the same time? Is it possible? स्नेह भी है और द्वेष भी है, एक ही समय है. क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर उस समय में द्वेष होगा तो स्नेह नहीं होगा. जेलसी है तो अफेक्शन एटलीस्ट नहीं है, अफेक्शन है तो जेलसी नहीं है. राइट? तो अभी हम लोग इस ये जो इंडिकेटर्स के साथ में चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो फीलिंग ऑफ अपोजिशन है, जेलसी है, ये भी हमें कभी कभी आती है, या हमेशा ये फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट उनके प्रति हमारा बना रहता है जिनको हमने अपने संबंधी के रूप में स्वीकारा. स्टार्ट इवैल्यूएटिंग दिस फ्रॉम योर फैमिली, then go to your near friends, near and dear ones, so friends, teachers. Right? अगर आपके संबंधी ने कोई अच्छा काम किया है तो will you have a proud feeling or you will have a feeling of jealous? क्या लगता है? So we can have a poll here. आपके फ्रेंड है ना, आपके फ्रेंड को आपसे 2 मार्क्स ज्यादा मिले तो आपको अच्छा लगेगा या जेलसी लगेगी कि इसको 2 मार्क्स मिले हैं? आपके फ्रेंड का सेलफोन आपके सेलफोन से अच्छा है ना, उसके कपड़े आपके कपड़े से अच्छे हैं. देखिए ये जो है ना, इसको अपने में बहुत ध्यान से जांच परख करके हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी अपनी फीलिंग्स बनती है. घर में कोई मेहमान आए और आपका बड़ा भाई या छोटा भाई है घर में, या बड़ी बहन है और छोटी बहन है घर में, और माँ पिताजी आपके बड़े बहन की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उतनी तारीफ आपकी नहीं कर रहे हैं, क्या फील करते हैं उस वक्त? अच्छा लगता है या लगता है कि मेरा तारीफ क्यों नहीं हो रही है, मुझे ही क्यों हमेशा खराब बोलते हैं? भाई की
बहन को ही हमेशा अच्छा क्यों बोलते हैं? अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके. यू आर सेइंग दैट समटाइम्स feels jealous, sometimes feel angry, sad. तो जो फीलिंग ऑफ अफेक्शन है, क्या वो हम में कंटिन्यूसली बन पा रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है? और वो हम कंटिन्यूस चाहते हैं या वो भी ऐसी चाहते हैं कि ठीक है, कभी स्नेह बना रहे, कभी स्नेह नहीं रहे. सो अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, acceptance of other as one's relative. The other is like me. ये ठीक रहेगा इस तरीके से डिफाइन करना अफेक्शन को? Is there any question? Any reflection? Any question? अफेक्शन से लेकर. Yes. Yansh? Yagnesh? Sir, you just discussed about कि jealousy होगा या नहीं, and people said कि they will feel proud, they won't be jealous, they will like that their friend, the person they like, are getting something better than them. But we all know कि थोड़ा सा jealousy होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा कि हम क्यों नहीं और वो क्यों. तो वो वाले फीलिंग से हम कैसे ओवरकम करें? Very nice. है ना, जैसे ही वो देख पाते हैं कि the other is like me, he is my relative, and if your relative is achieving something, you will have a feeling of proud. That is the proud feeling. लेकिन होता क्या है कि ये जो फीलिंग, हम रिलेशनशिप के साथ में जीना तो चाहते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली हमें रिलेशनशिप की फीलिंग्स इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं. ये ट्रस्ट इंश्योर नहीं हो पा रहा है ना, या तो फिर रिस्पेक्ट इंश्योर नहीं हो पा रहा है. तो जितने जितने हम ये फीलिंग्स को समझते जाएंगे, उतना ही समझ के साथ में जी पाएंगे. So invest some time understanding, development of this right understanding within. Invest some time in understanding these naturally acceptable feelings in the relationship. क्योंकि see, this is not only, क्या लगता है आपको, हम केवल परिवार में तो संबंध पूर्वक जीना चाहते ही है, और परिवार में जो अधिक से अधिक ट्रबल दिखता है, वो तो संबंध के भाव का निर्वाह नहीं होता है. उसी के चलते भी हम कॉलेज में भी एक दूसरे के साथ में कैसा जीना चाहते हैं, हम लोकल ट्रेन में भी जब जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ में कैसा जीना चाहते हैं. जब आप लोग आपकी पढ़ाई कंप्लीट करके जब जॉब के लिए जाओगे, तो जॉब भी तो आप आइसोलेशन में नहीं करने वाले ना, या कोई ऐसी स्थिति आने वाली है कि जब केवल कोई आप अकेली ही है दुनिया में और कोई नहीं है. नॉर्मली वी से दैट आई वांट टू हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ. इज इट एवर पॉसिबल टू बी इंडिपेंडेंट? We are always dependent on each other. We are always related to each other. Right? वो ग्रोसरी शॉप अगर बंद हो जाए तो खाने को नहीं मिलेगा ना. कहाँ से इंडिपेंडेंस चीज आ गई? वो लोकल ट्रेन अगर नहीं चली तो जा नहीं सकते हम कॉलेज. ये सनलाइट नेचर से मिल रहा है, हवा नेचर से मिल रही है, पानी नेचर से मिल रहा है, मेरी इतनी तो सारी डिपेंडेंसी है. लेकिन इसके साथ ही जो हमारी जो परसेप्शन है ना, दैट आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट. So we need to verify this. Is it ever possible to be an independent? Is it ever possible to have an isolation life? तो उसके साथ में ये दिखाई देगा कि जॉब में भी जब मैं जाने वाला हूं, तो वहां पर भी इतने सारे लोगों के साथ में मुझे इंटरेक्शंस करना है. कॉलेज में भी मुझे इतने सारे लोगों के साथ में इंटरेक्शंस करना है. फैमिली में, फ्रेंड्स में, फ्यूचर में मेरी आप सबकी शादी भी हो जाएगी, आपके आपके परिवार होंगे, दो अलग अलग परिवार के साथ में आपको इंटरेक्शंस करना होगा. जब आपके बच्चे होंगे तो उन बच्चों को भी वो सही समझ, सही फीलिंग्स को ट्रांसफर तो आप ही करने वाले हैं. तो स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ दिस राइट अंडरस्टैंडिंग विद इन, दिस राइट फीलिंग्स विद इन. ठीक है? इज दैट ओके?
याग्नेश? ठीक, बढ़िया. So affection is the outcome of trust and the respect. The acceptance that the other is my relative. Responsibility and the commitment for the mutual fulfillment in relationship is affection. अभी हम लोग जनरली जिसे अफेक्शन कहते हैं, तो उसमें ये बात आती है क्या, उसको भी देख चेक कर लीजिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कमिटमेंट फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट. ठीक. इसके साथ दिस इज सम ऑफ a very important issue for us as a student. What is the difference between interaction and ragging? Okay. Let us start exploring these things within yourself. How do you feel when a relative or a friend comes to your family, or a friend of your parents comes to your family, a friend of your brothers, sisters comes to your family? Do you feel happy about it? You feel comfortable? You sit with them, you listen to them, you share your ideas and thoughts with them, you exchange the feelings and words to satisfy them. If this is happening, this is interaction. And the interaction is the outcome of affection. Affection is the outcome of trust and the respect. So these are some of the indicators that you have these feelings within you. लेकिन घर में कोई व्यक्ति आ जाए, है ना, आपके रिश्तेदार आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, या आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स आ जाए, और आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, उनके साथ में बात क्या करनी है समझ में नहीं आ रही है. ऐसी मन में आता है कि पता नहीं क्यों आए, कब चले जाएंगे, मेरी प्राइवेसी को खराब कर दिया है. क्या लगता है, ये अफेक्शन है या लैक ऑफ फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप? तो जैसे अभी हम कॉलेज में जाने वाले हैं, है ना, ऑनलाइन से बहुत जल्दी हम ऑफलाइन जाएंगे, हम सभी लोग एक दूसरे को कॉलेज में जाकर मिलेंगे. ठीक. अब जब हम कॉलेज में जाकर मिलेंगे, ये क्या है ना, ये किस तरीके से है, ये किस तरीके से लड़का है, किस तरीके से लड़की, ये किस तरीके से टीचर है. अब जब इस तरीके से जो भी फीलिंग्स और थॉट्स हम में जनरेट होते हैं, जिससे किसी को देखकर हमें इरिटेशन आता है, तो क्या लगता है, हम उस अफेक्शन को, ट्रस्ट को, रिस्पेक्ट को अपने में इंश्योर कर पा रहे हैं क्या? जब ये अफेक्शन की फीलिंग का अभाव हम में होता है, when we lack the feeling of affection, then there is always possibility of teasing each other, making fun of each other, commenting each other on the basis of their color, on the basis of their body, on the basis of their gender. क्योंकि हम इस बात को देख ही नहीं पा रहे कि वो हमारे जैसे है. तो किसी का हाइट, कद अगर छोटा है तो उसको कुछ चिढ़ाना, किसी का कद बड़ा है तो उसको कुछ चिढ़ाना. We don't feel connected to the each other. We don't feel connected to the newcomer. और हमें ऐसे लगता है ना कि ये क्यों आ गए हैं. अगर आपके परिवार में कोई छोटे बच्चे ने जन्म लिया, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? Will you be happy or sad कि परिवार में एक नया बेबी आ गया? हम खुशी होगी हमें, है ना. तो कॉलेज में अगर नए बेबी आ रहे हैं, तो दूसरों को, जो कॉलेज के जितने लोग पहले से है कॉलेज में, उनको हैप्पी फील होना चाहिए या अनहैप्पी फील होना चाहिए? क्या लगता है, ये रैगिंग होनी चाहिए या रेड कारपेट वेलकम होना चाहिए? रेड कारपेट के साथ में वेलकम तो तभी हो पाएगा जब when we have this feeling of relationship with each other.
But ye ragging, torturing, harassment, what do you think that these are the indicators of we are able to understand relationship, or these are the indicators that we are not able to understand the relationship? अब थोड़ा सा ना इसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अगर आपसे कोई हर्ट हुआ है तो, या आप अगर किसी से हर्ट हुए हैं तो आप अगर किसी से हर्ट हुए हैं तो कितने दिन, कितने महीना, कितने, शायद कभी कभी ये भी हो सकता है कि ईयर्स आप परेशान हो चुके थे उसके वजह से, because you are hurt by someone, right? Does it happen? Had it happened in the past? Is it happening that whenever you get hurt by someone, there is possibility that you may remain disturbed within you for the days, for the months, and even sometimes for the years? Now, what do you think that if the other is getting hurt by you, does the other is going through the same turmoil what you had gone or you're going? So is it wise? Is this a normal mental status to seek enjoyment by hurting others, by teasing others, by commenting others? You think about it. So this is the difference between interaction and ragging. So whenever I interact, there's a feeling of relationship, there's a relatedness, there is affection, there is program for the mutual development, there is responsibility. So we may have a poll here, and let me see if there is any question, any sharing. Is there any question? Yeah, so there's a poll on the screen, and it says that in living, this is from the last session. We are ending this poll because this is from the last session. Okay. So it's a very simple question. Is it a wise, is it normal mental status to seek enjoyment by hurting others? Yes, Karan. And there is a question on the poll. You can respond here on the poll, and the YouTube students can respond on the YouTube chat. What is naturally acceptable to you, interaction or ragging? Yes, Karan Gupta. Can you please extend a time limit for poll, because it is very fast, because we are unable to read it and it is getting disappear. Yeah, the poll is there. The previous poll, we discarded because that was from the last session. Now there is a poll, and every poll remain on the screen for minimum 3 minutes. Is that okay? Will it be okay? 3 minutes time, Karan? Okay. Any other question or any other sharing? Okay, so when we look into the what is naturally acceptable to you, of course, this interaction is naturally acceptable to us. So when we are meeting each other, this welcoming with healthy interaction must be there, because we all are the member of the same institute family, the same college family, and we'll be staying together for minimum 3-4 years, and some of us are going to remain friends forever, even after graduating from this institute or the college. So thus we are related to each other and we want to know each other. So this healthy welcoming interaction is required.
So I'm asking you, suggest few ways to develop affection between a senior and a junior batch. Can anybody wants to, have suggestions on how to develop this affection between a senior batch and a junior batch? You can raise your hand. You can raise your hand and suggest few ways to develop the feeling of affection between junior batch and the senior batch. Yashoda Dhakal. Yes, Keshav Jha. Yeah, very good afternoon to everyone. Myself, Keshav Jha. So to begin to start interaction with anyone, we always need an opportunity. So here, to interact with the seniors, we require opportunity to actually to bring some topic into the conversation. So we should interact with a senior in terms of like uh, getting into the projects, taking help in studies, actually getting advice in our future careers like that, sir. So it will help to to create a conversation and a nice vibe between our seniors and our juniors, sir. That's what I feel. Very nice. Good suggestion. और कोई सजेस्ट करना चाहेगा कि किस तरीके से हम सीनियर और जूनियर बैच के बीच में ये अफेक्शन को डेवलप करें? Is there anybody else wants to share on it? ठीक है, you can think about it because you are going to meet your seniors soon, and then next year you will be welcoming your juniors with the red carpet. Let me ask this question to you. Next year you are going to become seniors. So would you like to welcome them with the red carpet with nice grand welcome ceremony or ragging? Arbaz Khan. Arbaz, you want to say something? You can unmute yourself. Let me put this question and you can respond to this question. Next year, you're going to be senior. So will you welcome your juniors with great grand welcome ceremony with red carpet, or will you go for the ragging? Very nice. Very nice. So once you become the senior, and if you welcome your juniors with the red carpet, it will become the tradition of your college. And every year, the same thing will happen. So your juniors will follow your steps. So if you develop this feeling of relationship and right understanding within, then you could be the motivational factor. You would be the role models for your juniors, isn't it? And this is what is naturally acceptable to us. Each one of us want to excel in the life. So let us understand excellence. What does it mean? So excellence means being better than other in a particular area of life, in a particular skill or something else. Ranking top in the university is excellence, because by becoming top in the university, you are being better than the other students in the particular area of study, or the excellence is something else. So we may have a poll here, and let me see if there is any question, any sharing from any student. So the poll is there on the screen. This is again from the last session. Yeah, this poll was from the last session, so we discarded it.
ठीक है, okay, leave it, Didi, leave the poll. I'll take it on the chart. That's fine. So you can respond to this question on in the chart. That what do you mean by excellence? Is it being better than other in particular area of field, particular area of life, particular area of skills, or it is something else? A or B? So can we go for it once more? No, that's fine. That's fine. Okay. That's fine. I'm just taking their responses on the chart. Okay. Others I'll relaunch it, sir. No, that's fine, Didi. That's fine. Okay. Thank you. Okay. Very nice. So it's sort of a mixed answers are coming. Some students are saying that it's being better than the another. Some are saying that it is something else. It's not being better than the another. Okay. Now let us see, if you want to excel in your life, then what will be the program for that? Through competition or through collaboration? You want to excel in your life, right? So what program you would have for that? The competition or collaboration? So you can respond in the chat, competition or collaboration. These two responses are important. Very nice. You are saying that collaboration. Good. Most of you are responding with the collaboration. And there is a mixed response too. So let us understand what is mean by excellence. Okay. श्रेष्ठता जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो श्रेष्ठ होने का मतलब क्या है? What is meaning of excellence? You have a basic goal. You have a basic desire of continuity of happiness and prosperity. And if you are able to achieve it, आप निरंतर सुख और समृद्धि के भाव से जी पा रहे हैं. Every moment you are able to live with it. अगर ये हो गया, तो will there be anything else to achieve? If you develop the competency to live with continuous happiness and the continuity of, continuously with the feeling of prosperity, if you able to do that competency, and if you are living continuously with happiness and prosperity, will there anything else to be achieved more? Very nice. You are saying that no. उसके बाद तो केवल उसके साथ निरंतरता से जीना है, क्योंकि वो योग्यता विकसित हुई है. मैं स्वयं से लेकर अस्तित्व तक की हार्मनी को समझकर कंटिन्यूअसली अपने में हैप्पी होकर जी पा रहा हूं, प्रॉस्परस होकर जी पा रहा हूं. अब मेरे पास में अचीव करने के लिए कुछ नहीं है. दैट स्टेट इज द स्टेट ऑफ एक्सीलेंस. वो है श्रेष्ठ, वो है श्रेष्ठता. Is that okay? So making efforts for excellence and competing with each other is not the same. In excellence, one helps to bring other to his or her own level. Complementariness है. कोलैबोरेशन के साथ एक्सेलेंस का प्रोग्राम बनता है. रिलेशनशिप के साथ, अफेक्शन के साथ एक्सेलेंस का प्रोग्राम बनता है. लेकिन जब भी हम कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, तो कॉम्पिटिशन्स में she hinders the other from reaching to his or her level, right? तो कॉम्पिटिशन में रेफरेंस पॉइंट हमेशा दूसरा होता है. दूसरे से हम आगे जाना चाहते हैं, इसकी क्लैरिटी भी नहीं है कि हम आगे कहां जाना चाहते हैं. ना उसको ये ब्रांच मिली तो मुझे भी वो ब्रांच मिलनी चाहिए, तो उसको मिली है,
लेकिन उस ब्रांच में जाकर मैं क्या होना है मुझे, वो भी क्लैरिटी नहीं है। उससे 96 मिले तो मुझे 97% मिलना चाहिए, लेकिन ये 97% पाकर भी मुझे क्या होना है उसकी ही क्लैरिटी नहीं है। So in the competition, there is always the other is your reference point. एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, है ना? स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू? ए, क्लासरूम में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से समझना। बी, क्लासरूम में पहला नंबर लाना। A, whatever has been taught in the classroom, you want to understand it. B, you want to top in the classroom. Very nice. Everybody is responding A. Though you have been told to top in the classroom since you started going to the schools, from your parents, from your teachers, from your, siblings, cousins, relatives. हर व्यक्ति यही बोलता है कि बेटा इतनी पढ़ाई करना कि क्लास में टॉप ही आना है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आपके नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर करते हुए आप इसको आंसर कर रहे हैं, तो आपका आंसर ये निकल के आ रहा है कि मुझे क्लासरूम में जितना भी पढ़ाया गया है उसको समझना है। समझने के प्रोसेस में वी हैव रैंकिंग टुडे, वी हैव ग्रेडिंग सिस्टम। So in the process of understanding whatever has been taught in the classroom, by having this complementarity with my friends who are studying in my class, I may top in the classroom. लेकिन क्लास में टॉप आना यह हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है। क्लासरूम में जितना भी पढ़ाया गया है उसको समझना यह हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है। और अगर हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखा तो दिखता है कि इट इज पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सारे बच्चे में समझने की क्षमता तो है ही, पोटेंशियल तो है ही। सो ऑल कैन अचीव एक्सेलेंस। लेकिन टॉप आने की बात अगर कर दी तो क्लासरूम में तो कोई एक ही टॉप आएगा, यूनिवर्सिटी में तो कोई एक ही टॉप आएगा। तो ओनली वन कैन बी द स्पेशल। So let us see this, whether you want to be a special or you want to reach to the state of an excellence. There's a big difference between working for the competition and working for the excellence. जब हम competitions की बात करते हैं तो I have to be above others, ये basic feelings के साथ ही competition शुरू होती है। Now you have to be above others, ये feelings अगर रही तो others के साथ में you have opposition or relationship. Let us start observing these things. जिनके साथ भी आप compete कर रहे हैं उनके प्रति अपोज का भाव होता है या संबंध का भाव होता है। So there's a feeling of relationship, there's a feeling of opposition. Ask this question to yourself. So there's a feeling of opposition, right? और जब ये अपोजिशन का भाव हुआ तो दूसरे को आप आपके लेवल पर आना नहीं चाहते, लाना नहीं चाहते, तो जो डोमिनेशन है, मैनिपुलेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो सब बातें दिखती है। और this feeling is based on the assumption, it is not based on the natural acceptance. So the assumptions may change from time to time. This feeling is based on over evaluation or under evaluation. The reference is other and may have a piecemeal approach. This results into a conditional relationship. इसलिए जनरली हम ये कंप्लेंट्स करते हैं ना कि 2 साल तो कोई दोस्त मेरे साथ अच्छा रहा, उसके बाद में तो दोस्ती नहीं रही, क्योंकि कंडीशनल रिलेशनशिप है वो, हम संबंध को समझ नहीं पा रहे हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन इज रिलेटिव, इट हैज नो डेफिनेट कंप्लीशन पॉइंट। यू आर competing, you are ranking top in the university today, tomorrow somebody else will rank.
Today someone has scored like 100 century, कल कोई ना कोई आएगा 101 सेंचुरी लगा देगा. तो कोई भी अगर कॉम्पिटिशन्स की बात की जाए तो जनरली ये कॉम्पिटिशन स्किल के आधार पर होती है, और स्किल का कोई डेफिनेट कंप्लीशन पॉइंट नहीं है, वो हमेशा रिलेटिव है. बट व्हेन वी आर सेइंग एक्सीलेंस, the feeling of excellence is based on the other is like me, we are complementary to each other, and this feeling is based on the relationship. अफेक्शन के साथ, विश्वास के साथ, सम्मान के साथ में ये भाव बना है, तो हम दूसरे को हमारे जैसे बनाने का हेल्प करते हैं. It operates on the basis of the natural acceptance, so there is always right evaluation. और हम हमारा रेफरेंस पॉइंट है, we have that holistic view, and there is definite completion point of excellence. And what that completion point is, development of competency to live with definite human conduct, development of competency to live with continuity of happiness and prosperity. So are you able to see that there's a difference between excellence and competitions? So it's all depends on our perception. It's all depends on our perception upon the world view. In today's world, what we have assumed, A, there's a struggle for survival and the survival of the fittest. B, there's a relationship of mutual fulfillment in nature. What have you assumed, A or B? So you can respond on the poll. You can also respond to the chat, YouTube student, that what have you assumed? And as I'm seeing that most of the students are responding that there is a struggle for survival and the survival of the fittest. Okay, let me ask you this question. There is one room, a single room is there, and there is only one roti, two people are there. The one is physically strong and other is physically weaker. Who will get this roti? You can respond in the chat box, stronger or weaker. एक कमरा है, एक फिजिकली स्ट्रांग है, एक फिजिकली वीकर है, एक रोटी है, रोटी किसे मिलेगी? If you go with the rule of struggle for survival and the survival of fittest, स्ट्रॉन्गर को रोटी मिलेगी, है ना? जो फिजिकली स्ट्रांग है उसको रोटी मिलेगी. मैं आपको बताता हूँ दो लोग कौन है. जो फिजिकली स्ट्रांग है ना वो आप है, और जो फिजिकली वीकर है ना वो आपका छोटा भाई है. अब क्या लगता है किसे रोटी मिलेगी, वीकर को या स्ट्रॉन्गर को? वेरी नाइस. नाउ यू ऑल आर सेइंग दैट इट्स वीकर. आप अभी कह रहे कि हाफ हाफ मिलेगी, शेयर करेंगे, दोनों को भी मिलेगी. So whenever we are able to identify that relationship, we nurture each other, we help each other. But when I'm not able to identify that relationship, there's a struggle. लोकल में जाते हो, कहीं कहीं आप सीट पे बैठे हुए हैं और कोई आपका फ्रेंड अगर दिखाई दिया, वो खड़ा है, तो ऐसी होता है नहीं होता है कि आप कहते हैं कि आ जाओ बैठ जाओ, दोनों मिलकर बैठ जाएंगे. हो जाता है, राइट? रास्ते में अगर चले कभी तो आपको दिखाई देगा कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की इतनी बड़ी भीड़ आती है और भीड़ में से कोई एक अनजान व्यक्ति उस व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है. So whenever there is a feeling of relationship, it's only nurturing and helping other. It's a mutual fulfillment. So this struggle is basically the lack of feeling of relationship. So what we discussed today is this feeling of respect and the feeling of affection. So respect
is basically the right evaluation. Affection is the feeling of being related to other, acceptance that the other is my relative, and then each one of us wants to excel in our life. So the excellence would means understanding harmony at all the 4 levels of my being and living with that harmony. Excellence is the result of collaboration. So thank you so much for your listening and self-verification. I think the time is 6:45 now. Yes, sir. Yes, thank you. Thank you all. We can open up discussion for the question and answer, the optional session. We'll invite Ila Didi and Yashwant Bhaiya. Yeah, namaste Bhaiya. Thank you. Thank you, Umesh Namaste, Bhaiya. Bhaiya. Thank you. Wonderful interactive Namaste. session. Namaste. Just before you start, the assignment link has been put and it will open at 7:30. Yes. Namaste, Didi. Namaste, Yashwant Bhaiya. Over to you. धर्मेश जी. नमस्ते दीदी. यस मैम. मैम कल भी रहेगा ये सेशन कि डायरेक्ट अभी मंडे को? Tomorrow it is there. There na? Same timing, 3:30 to 7:40. On Sunday? Sunday is not there. Okay, sir. Thank you. Dharmesh, you have any other question or you want to share any reflection? Okay, anyone else who would like to ask any question or share reflection on the sessions that you attended, the proposals that were kept before you all? I'm sure there has been a lot of self-exploration. Yes. Adarsh? Yes. Adarsh, would you like to Yes, ma'am. unmute First and of all, present your yes, question? ma'am. Yes, ma'am, please. Thank you. First of all, a very great session. और दूसरा बात मेरे को वो बोलना था सर, वो स्ट्रॉन्गर और वीकर वाली बात पे जब आपने पहला प्रपोजल रखा कि किसको मिलेगा, स्ट्रॉन्गर को या वीकर को, तब सब लोग ने यही बोला कि स्ट्रॉन्गर को मिलेगा या फिर हम स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम लेंगे सर. पर एज ए ह्यूमन मेरे को लगता है कि हमारे दिमाग में पहली चीज ये आनी चाहिए कि हमें शेयर करना चाहिए. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे दिमाग में शेयर करने वाली बात आई थी, मेरे दिमाग में भी यही आया था कि स्ट्रॉन्गर को मिलेगा, तो मैं स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं लूंगा. पर सर ऐसा एज ए ह्यूमन हमारे दिमाग में सबसे पहली बात यही आनी चाहिए, राइट, कि हाँ वो वीक है तो उसको भी आधा दूंगा और आधा मैं लूंगा. तो वो बात ऐसा ही क्यों होता है सर कि जब रिलेशन आए तो ही आता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम लोग को सबके लिए इक्वली सोचना चाहिए, राइट. और वो सोच डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर, मेरे को पूछना था. You have to basically you have to venture on your own self-exploration. You have to, it's more of self-reflection and looking at your the right understanding, what you think, what you feel is the right way to go about. Yes, Adarsh, what do you think? Ma'am, I'm very confused. Like, cause the first thing what I expected from myself was that I will be sharing. I'm a very good human. That's what I think about myself, right? But after that question, I was very confused, right? Because I'm very confused, ma'am. I'm sorry, ma'am. No, you're specifically talking about the sharing part, right? Yes, ma'am. Yeah, So, Didi. It's a very nice exploration from Adarsh. While responding to the poll, first he responded that the stronger will get. And then when I asked that the stronger is you and the weaker is your brother, who will get? So immediately he must have changed his answer.
And now he's asking, based on that verification, why it has happened, why I couldn't thought of sharing the things, or why I couldn't thought of giving the things to the others. Excellent self-exploration. Yes, see this sharing the things, giving the things to the other, taking others' responsibility, remaining committed to the others. This comes with the feeling of affection. And the affections comes with the feeling of trust and the respect. So each one of us has got this natural feeling, natural acceptance to live with the feeling of relationship. So the more and more we understand these feelings of relationship, then we become, more responsible in our behavior and more committed in our behavior. So there is possibility that, you're verifying these particular things in you now. And next time if someone asks you this question, I'm sure that your answer will be either the sharing or the weaker should get it. And for that, you will take a try to develop this understanding and that feelings within you. Yes, It's a very nice verification. Yeah, very good verification. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Adarsh, for your question. Yeah, so now the floor is open for others also. Kindly raise your hand. You may have a question or you may not have. You can always do the sharing. And Yashwant Bhaiya, we would like to hear from you also. Yes. In fact, students just wanted to know, because since some of you may be at home, maybe your parents, brothers, sisters, they may be also listening to the program. Any sharing from about that one? How means, because most of the students are saying the program is very nice, but how your parents or brothers, they are feeling about this? Because today morning, I just asked one student from our college, I just wanted to know how the session is going on. So she generally said very happy. And then I just asked us, what about the family members? Then she told me that yesterday her father was listening to that session on health. And then father also realized that lunch time is very late. So then they have decided together that from today onwards, they will be having their night, meal before 8:30. Okay. So in fact, even means at family level, they have decided. So any such sharing students want to do? Yeah, also Nidhi and Hiren, you all have definitely given your feedback, and many others who have given. We would like to hear a little more in detail from you all. At least a sentence from you. Kapil Bhatia, you got microphone, you can unmute yourself. पिछले 4 दिन से हम सबकी चर्चा चल रही है, तो आज हम कम से कम आपसे सुनना चाहेंगे, सभी से सुनना चाहेंगे कि कैसे लग रहा है चर्चा है आपको, ये डिस्कशंस कैसे लग रहे हैं, कुछ आप इसको हेल्प हो रहा है आपको, या जस्ट एक टाइम वेस्ट हो रहा है? आप लोग शेयर कर सकते हैं सारी चीजों को, या आपके जो क्वेश्चन है वो भी उसको पुट अप कर सकते हैं। ये जो टाइम है, ऑप्शनल टाइम हमने इसीलिए रखा कि सेशंस में एक दूसरे के साथ में ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं हो सकती, तो ये कम से कम 6:45 to 7:30 हम खूब एक दूसरे के साथ में डिस्कशंस करें। ठीक, विश्वजीत? Yes, Vishwajit, please go ahead. Kindly unmute yourself. Vishwajit? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, you're audible. Go ahead. Yes, last 3 days, very best session. And these sessions are very helpful to become a great human. Not a human, great person in our future. That's why I will thank to all your team. Thank you. Very good reflection. Human, good human also, na? Yes, very nice. Very nice. Yes, can we have Kanchan? Hi, Vishal here. I am a family member of Kanchan. Okay.
I was working from home when I listened to this talk, to this session, and I felt that the health session was really good. And along with that, the mental well-being and physical well-being is also important. And surely I will try to use this knowledge in my daily routine to make myself more. What I mean to say is, हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं हमारी लाइफ में, and going forward, I will make sure that I will follow the routine which you have told us. Thank you for this session. बहुत बढ़िया Thank विशाल you. जी, कांचन जी, आप Thank you, दोनों के Vishal. साथ में मिलकर बैठकर सुन रहे हैं. Very nice. Thank you. Yeah. You made good use of your time at home. Yeah. Thank you so much. Yeah, can we have some more sharing? What about Kanchan? Would Kanchan want to share something? Kanchan beta? Not be beta, but where is she from? Which college? Yeah, Kanchan ji? Again, you have to unmute her again. Yeah. 30 seconds, you have to keep unmuting. Yes. Yes, Kanchan. PLIT बुलढाणा. अच्छा, okay. Which college, ma'am? PLIT बुलढाणा, पंकज लंतड़ टॉप इंस्टीट्यूट. Okay. आपको कुछ कहना है कांचन? कुछ शेयरिंग करना है आपको? I think she's muted again. ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा. जी कांचन. और कुछ कहेंगे आप? आपको कौन सा सेशन या कौन से एस्पेक्ट्स आपको ज्यादा टच हुए? Hello. Yeah. This is admin, University of Mumbai. Yeah. Mohan sir, do we have to stop the YouTube live and confirming it? Yeah, correct. Yes.